evidence and real-world challenges in our practice. Our first guest speaker for this session is Professor Abbas Khokhar. He is the head of the Oncology Department at Mayo Hospital. He has played a key role in oncology training and clinical practice in Pakistan. He will update us on early breast cancer with special focus on hormone receptor positive, HER2 positive disease. So please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much. Thank you, the organizers, for inviting me for this important talk, and thank you everyone for sparing your time to listen to this talk. So, updates in HER2 positive. I was seeing the agenda, and I have noticed that there is a lot of overlap between my topic and the topic which will be discussed after me. So, in the interest of time, I will skip a few slides, and I hope that most of us who are sitting here, they are surgeons. So, I will try to simplify my talk according to the surgeon's perspective. सर आप मुश्किल सवाल करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर्जन्स हैं, उनका एक स्किल है, और ये समझना हमें कि क्या अपडेट्स हमारे एंड पे। इसी तरह से हम सर्जन से लर्न करते हैं, तो देयर आर मेनी न्यू टेक्निक्स which develop over time and we are not aware of. So that is the main purpose of MDTs, in which we learn from each other, and there are certain new techniques, new technologies which are coming up, like robotics or something, and they may be useful and we may not be aware of them. Okay, sir? So we will be talking about epidemiology of HER2 positive disease and hormone receptor positive disease. It's a unique topic because we usually talk about HER2 separately, and hormone receptor diseases, they are being discussed separate. But in this case, if ER positive and hormone and HER2 is positive, that becomes a different entity, and there are different, slightly different guidelines in managing these patients. We will talk about pathophysiology, luminal classification, the testing modalities, new terminologies. They are being introduced recently about HER2 low and ultra low, and what is its significance, and updates in management of disease setting, neoadjuvant, adjuvant. I will very shortly touch upon the metastatic disease, or which will be discussed in subsequent lectures as well. And what are the roles of oral anti-HER2 therapies, and what are the options in low and ultra-low HER2 positive. Then we will also discuss the second part, that is hormone receptor positive disease. The hormone receptor positive disease is part of our spectrum that we will be discussing. So this is about the ER positive, HER2 positive. It accounts about 10 to 20% of the whole breast cancer only. The most of the cancer that is the most of the breast cancer, it presents in ER positive disease, HER2 negative disease, that is 74%, but HER2 positive and HER2 plus ER positive, that is relatively rare, that is only 10 to 20%. And when we classify it according to luminal classification, it is actually a genomic classification, but when we see it on phenotypically, the luminal B is, it resonates with our hormone receptor positive and HER2 positive disease. Again, this is only 20% of the total breast cancer, and prognosis wise, it has intermediate kind of prognosis, and the luminal A, as we know, that ER positive disease and HER2 negative disease, it has got the best prognosis, but ER positive and HER2 new positive disease, that comes into the intermediate grade. How do we
how do we check or how do we test the HER2 positive that we all know? And from the surgeon's perspective, we know that when we order HER2 test, we order it by IHC, that is immunohistochemistry. And this classification shows that how do we interpret what is HER2 0, 1 plus, 2 plus, or 3 plus. So just for the sake of reminding that when conventionally, historically, when we talk about 0 and 1, we take it negative. And when we talk about 3 plus, we take it positive. And when we are talking about HER2 2 plus, we have to check it through a FISH test. And in the FISH test, if the test shows amplified, there is a certain cutoff. If it shows amplified, that means HER2 positive, and we will manage those cancers according to HER2 3 plus. And if it comes non-amplified, we will mark it as negative or HER2, in which we do not practice the anti-HER2 spectrum. However, in the recent advances, we have seen that even if it is HER2 negative, even if it is HER2 1 plus or HER2 0, it has got its significance. That means that if it is HER2 1 plus, we label it as HER2 low, and if it is 0, but there is it is the level of staining of HER2 on the cell surface is less than 1 plus, but it is still there, we label it as HER2 low. But if it is HER2 negative, there is absolutely no HER2 on the cell surface, cytoplasm, cell membrane, then we will label it as HER2 negative. What is ultra low? Ultra low is then when it is less than 1 plus. HER2 negative है ना सर, उसमें अल्ट्रा लो वाला पार्ट आता है, अभी आगे भी आएगा. So negative means there is no marker or no immunohistochemical marker staining on the cell surface, and ultra low means there is some, but it is less than 1 plus. थोड़ी बहुत भी है तो वो भी उसको अल्ट्रा लो भी है और उसकी भी सिग्निफिकेंस आ गई है उसमें उसकी that is kind of a predictive biomarker. We welcome Professor Dr. Kaushal Bana from Allama Iqbal Medical College. Thank you, madam, for coming here. Thank you for honoring us. So we will be talking about treatment setting. Although I have been assigned to do the management in only early HER2 positive, hormone receptor positive disease, I will slightly touch upon the adjuvant as well as metastatic setting. So traditionally, we have been using taxanes plus trastuzumab. ये सबको पता है कि Herceptin हम use करते हैं जब HER2 positive disease आ जाती है, और most of the time we combine it with some chemotherapy which is taxanes, either docetaxel or paclitaxel. We cannot combine it with anthracyclines because we know that anthracyclines and trastuzumab, when they are combined, they can cause cardiotoxicity, and that is actually forbidden. That is actually prohibited that we use it in combination at the same time. However, we can use it subsequently, that we give anthracycline and followed by then we can give this HER2 and taxanes. But we have seen that now is the era when we use dual anti-HER2 blockade, that is trastuzumab and pertuzumab, but that should not be used in every setting. The benefit of trastuzumab plus pertuzumab is mostly seen in diseases which are T2 or a larger tumor, or which are having node positive disease. So that can be used in neoadjuvant setting. तो सर्जन्स के लिए particularly मैं अर्ज करना चाहूँगा कि HER2 disease is an aggressive disease. HER2 जब भी आ जाए aggressive disease होती है, and we tend to give neoadjuvant therapy at any stage whenever HER2 becomes positive. और अगर वो T2 लीजन है, T2 का मतलब है सिर्फ 2 सेंटीमीटर से बड़ा है,
और अगर वो node positive disease आ गई है somehow clinically or on an FNAC, then we prefer to give neoadjuvant therapy, and then we prefer to offer dual anti-HER2 blockade. So is there any evidence for it? Yes, we know that whenever we give trastuzumab, पहले सिर्फ कीमोथेरेपी दी जाती थी, लेकिन जब इंट्रोड्यूस करवाया गया ट्रास्टुजुमैब तो उसके साथ देखा गया कि ट्रास्टुजुमैब के साथ पैथोलॉजिकल कंप्लीट रिस्पांस ज्यादा हो गया 22 वर्सेस 43%, और डिफरेंट स्टडीज ये बताती हैं कि अबाउट 40 to 60% पेशेंट दे वेंट इनटू पैथोलॉजिकल कंप्लीट रिस्पांस. Pathological complete response is important. Why is it important? Because it is a marker. It is a marker for the survival or event-free survival or progression-free survival or recurrence-free survival and overall survival as well. तो हमने ये देखा कि ट्रास्टुजुमैब को कंबाइन करना कीमोथेरेपी के साथ, उसके बावजूद pathological complete response was not achieved in about 40 to 60% of the patients. So that gives us the idea that we should introduce something else to enhance the level of pathological complete response. Pathological complete response क्या neoadjuvant therapy दी, surgery की, देखा तो disease should be negative, it should be zero, invasive disease should be zero. लेकिन अगर कुछ disease बची है, although it was responding, पहले 4 सेंटीमीटर की थी, अब 2 सेंटीमीटर की हो गई है, लेकिन zero achieve नहीं हुआ, तो that means कि there is some resistance. So this is the meta-analysis which shows that pathological complete response, survival curves है, pathological complete response जिनमें achieve हुआ वो अच्छे perform कर रहे हैं, उनका line सीधी चल रही है, और जिनका pathological complete response achieve नहीं हुआ उन patients में उनके events, उनके progression, उनके survival that was quite less as compared to the who achieved pathological complete response. This is another thing which shows that the association of pathological complete response with long-term outcome is stronger in high-risk subtypes. जो high-risk subtype है, उसमें हमने देखा कि अगर pathological complete response नहीं achieve होता, तो these patients they do not do better, and as compared to those who have achieved pathological complete response. तो इस वजह से एक और anti-HER2 develop किया गया, which was pertuzumab. That is anti-HER2 as well as anti-HER3. Anti-HER2 और anti-HER3 भी आपस में communicate करते हैं, और उसकी वजह से भी cell signaling और वो वाली survival pathways active हो जाते हैं. तो उसके लिए दो trials, Neosphere and Trifina trial, they were designed in which different combination, in which Neosphere में 4 combinations को try किया गया, और Trifina में 3 combinations को try किया गया, और उसमें ये देखा गया कि whenever we give dual anti-HER2, it was better at 3-year and 5-year survival cutoffs. You can see that it was 88 versus 79% and 84 versus 73%. तो 10% का फर्क हमें अचीव हुआ. तो क्या हुआ कि फिर भी कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो पैथोलॉजिकल कंप्लीट रिस्पांस में नहीं जा पा रहे थे, तो उनके लिए फिर मतलब देखा गया कि कौन सी ऐसी सब टाइप्स हैं which are responding better with dual HER2 blockade. उसमें देखा गया कि तकरीबन सारी सब टाइप्स they were responding to anti-HER2 dual HER2 blockade. However, the major benefit was seen ER negative, PR negative and HER2 positive disease. लेकिन अगर ER PR positive और HER2 positive disease को देखा कि फायदा उसमें भी हुआ था, लेकिन उसमें as compared to ER PR negative थोड़ा सा कम हुआ. अब रेजिडुअल डिजीज आ गई है, तो इसका मतलब है कि हमने चाहे एंटी-HER2 थेरेपी सिंगल दी है या डबल दी है, फिर भी रेजिडुअल डिजीज आ गई है, तो दैट मींस द प्रोग्नोसिस इज पुअर. देयर इज अ चांस कि मरीज को डिजीज जल्दी वापस आ जाएगी या मरीज का सर्वाइवल लो है. तो उस वजह से एक और चीज इसमें इंट्रोड्यूस की गई which was एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट ADC. ये क्या चीज होती है? एंटीबॉडी को उन्होंने उसके साथ पेलोड लगाया which was a molecule, chemotherapeutic molecule, कि जब एंटीबॉडी उस एंटी-HER2 के ऊपर अटैक करे तो साथ अपना मॉलिक्यूल भी भेज दे अंदर ही, और उसकी वजह से सेल के अंदर सेल साइटोटॉक्सिसिटी बढ़ जाती है. तो that was TDM1,
and 3-year invasive disease-free survival was in favor of using TDM1 and led to its approval in adjuvant setting in Catherine study, जिसके साथ हमें मुझे नजर नहीं आ रहा इसमें, लेकिन इसके साथ भी काफी अच्छा हमें रिस्पांस मिला और that was in favor of using TDM1. Now January 2026 ये वही महीना है जो जिसमें हम खड़े हैं, इसमें नया ब्रेकथ्रू हुआ, ये recent advances. The TDXD has been approved in high risk and in those patients who have residual disease after upfront therapy in anti-HER2 with anti-HER2 setting. तो न्यू एडजुवेंट में हमने थेरेपी दी लेकिन रेजिडुअल डिजीज बच गई या T2 से T4 तक या नोड पॉजिटिव डिजीज थी, तो इन पेशेंट्स में ये देखा गया कि इफ वी गिव TDXD क्या है, ये भी एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट है, बट इसमें क्या है कि एंटी-HER2 के साथ जो कीमोथेरेपी का पेलोड है, जो मॉलिक्यूल लगाया गया है, वो वाला नहीं है जो पहले था. TDM1 में डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है. इसमें एमटेंसिन है सर, उसमें एमटेंसिन है, इसमें क्या है डिरेक्सटिकैन. यस, डिरेक्सटिकैन. डिरेक्सटिकैन है, इट हैज शोन बेटर रिजल्ट्स, इट हैज शोन बेटर प्रोग्नोसिस, और इसमें ये देखा गया कि TDM1 एज कंपेयर टू डिरेक्सटिकैन, ये वाला मॉलिक्यूल इट डिड बेटर and that led to its benefit, proven benefit in HER2 positive high risk diseases. तो ये कुछ फर्क है जिसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, टाइम काफी हो गया. ओरल एंटी HER2 थेरेपी निरेटिनिब, इसका भी रोल है. इसमें ये थोड़ा सा डेटा पुराना है. ओरल एंटी HER2 थेरेपी इन हाई रिस्क HER2 पॉजिटिव डिजीज में निरेटिनिब कैन बी गिवन in adjuvant setting. However, this was done in a time when there was TDM1 data and TDXD data was not available. Endocrine therapy में list of therapies हैं which are available. देखिए, हमें HER2 positive disease में preferably we have to use chemotherapy along with anti-HER2 therapy. We cannot combine hormone therapy with एंटी-HER2 थेरेपी अपफ्रंट. तो जहां पे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है हमें, क्योंकि ये एग्रेसिव डिजीज है, कीमोथेरेपी को कंबाइन करना है एंटी-HER2 के साथ. हाँ, लेकिन अगर कोई मेटास्टैटिक डिजीज है या कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसमें हम कीमोथेरेपी यूज नहीं कर सकते, इन दैट केस इन पैलिएटिव सेटिंग वी कैन यूज एंटी-HER2 along with hormone and along with endocrine therapy, and this is a list of endocrine therapies which are available to be combined with anti-HER2. HER2 लो एंड अल्ट्रा लो, इसमें TDXD का रोल है. TDXD अभी हमने जिक्र किया, तो TDXD कैन बी यूज्ड इन दिस सेटिंग. मेटास्टैटिक में अभी मेरा ख्याल है डॉक्टर ताहिर साहब पढ़ा ही देंगे. तो ट्रास्टुजिमेब डिरेक्सटिकैन, सुपीरियर एफिकेसी. However, taxanes plus erchepin plus Perjeta, that is dual HER2 blockade, remains the first line therapy for metastatic HER2 positive disease. And there are a list of therapies which are available in ER positive and HER2 positive diseases which can be combined in this setting. In conclusion, dual HER2 blockade may benefit in hormone receptor positive and HER2 positive disease in T2 and or not positive disease. Trastuzumab deruxtecan has shown promising results in almost all types of HER2 positive diseases across all disease stages. Upfront chemotherapy should always be combined in curative setting and do not right away jump to the endocrine therapy. In metastatic setting where better quality of life is the main objective, endocrine therapy along with anti-HER2 therapy may be considered. And with the availability of options in low and ultra low HER2 expression, the spectrum of use of anti-HER2 therapy has broadened. Thank you very much. Thank you, sir, for this enlightening talk. Our next speaker is Dr. Kosar Bano, a consultant medical oncologist. She is currently working as the head of Department of Oncology at Jinnah Hospital, renowned for her involvement in academic oncology and cancer awareness. Today, she will be discussing recent updates in early triple-negative breast cancer. Ma'am, please.
Assalamu alaikum. Dr. Abbas' lecture was very thought-provoking and very informative. And I'll be just presenting few slides. And most of my talk, some from most of these things, few have already been discussed, Dr. Abbas. So I'll try to save time. I'll be, Dr. Bal just talked about the HER2-positive early breast cancer, and I'll be discussing some points in the regarding updates in the triple-negative breast cancer. Regarding triple-negative breast cancer, as an oncologist, I'm always afraid when a triple-negative breast cancer patient comes to me at early stage, because I know that majority of our triple-negative breast cancer patients, they are young, they have aggressive disease, and there are high chances that the patient will have a metastatic disease in coming few years. As we know that the triple negative breast cancer is very aggressive, it tends to recur very quickly, and most of the time it's a bit treatment refractory in certain patients. And as compared to the other breast cancers at early stage, it most of the time it recurs in the viscera. As we know that hormone receptor positive breast cancers, they tend to have mets in the bone, but in triple negative, most of the time the metastases are in the lung, brain, and the local recurrence time is short. Recently, in last few years, it has been recognized that, as we all know, that the breast cancer is a heterogeneous disease with different subtypes, different molecular subtypes. The triple negative breast cancer itself is heterogeneous. There are different molecular subtypes up till now. For really, although there are other molecular subtypes, but most of the time we say that it's the four molecular subtypes of the triple negative breast cancer. Although still we clinically do not type triple negative breast cancer, as we do not alter our treatment plans as per the subtype of the triple negative disease, but still there are four types, and the basal like and these types, they tell us the aggressiveness of the disease, the some information about the chemo sensitive disease. As we know that the basal like cancers, they have more chemosensitivity as compared to the other types. The recommended algorithm for the management of early stage triple negative breast cancer, and it's endorsed by different guidelines. They said that when the triple negative breast cancer early stage is T1C. From starting from the T1C, we need to offer these patients neoadjuvant chemotherapy in stage 2 and stage 3 as well. So if the disease is less than 1.5 centimeter, no negative disease, the upfront treatment is surgical resection. But beyond 1.5 centimeter, we need to start patient on neoadjuvant chemotherapy. Why we need to give neoadjuvant chemotherapy in these patients? As at times we know that in certain patients we need to give neoadjuvant chemotherapy, downstage tumors to get breast conservation therapy. It also allows to buy us time to get certain genetic mutational testings done to know the characteristics of the cancer, and if we can offer the patient some targeted therapies. In addition to these benefits, it also let us know the chemosensitivity of the cancer, whether the patient is going to respond to chemotherapeutic agents or not. Now, the added advantage of neoadjuvant chemotherapy is that if it's effective and we achieve a pathological complete response, it helps to improve the overall survival of the patient. And there are certain there are certain trials that ongoing to improve the pathological complete response in breast cancer patients with the use of neoadjuvant chemotherapy. And in triple negative breast cancer, meta-analysis have shown that if we add platinum
to the standard chemotherapy regimes that we all know, that anthracyclines is followed by taxanes. If we add the platinum agent, there is improvement in pathological complete response from around 10 to 15% with the addition of platinum. And now we routinely incorporate platinum in neoadjuvant chemotherapy protocols of breast with the triple-negative breast cancer. The trials are ongoing for the antibody drug conjugates. There are other agents, the immunotherapeutic agents. They are also tested in the neoadjuvant setting in triple-negative breast cancer. Now we know with these we know that why the pathological CR is important. The pathological, the certain meta-analysis of different trials have shown that if a patient achieves pathological CR, the patient has improved event-free survival and overall survival. Triple-negative breast cancers, as they are aggressive tumors, as compared to the hormone receptor positive disease, they have better chemosensitivity, and with the use of routine chemotherapeutic agents in the neoadjuvant setting, there are 30 to 40% of the cases in which we achieve pathological CR in triple-negative breast cancer patients. Now, how we can improve this? We need to improve pathological CR with the addition of certain chemotherapeutic or immunotherapeutic agents. So there are different modalities that are that are being tested in ongoing trials, and some with the proven efficacy. One of those is the addition of immunotherapy in upfront setting. The keynote 522 trial, it showed that the addition of pembrolizumab in neoadjuvant regime and in stage 2 and 3 patients of early stage triple-negative breast cancer, the incorporation of it achieved improvement in the pathological CR. As we can see in this table, whether patients were PD-L1 positive or negative, they all had improved path CR when compared to the placebo arm. So the one of the goal to add the immunotherapy in upfront setting was achieved in the keynote 522 trial, and the overall survival data from this trial showed that at 36 months, the overall survival with pembro arm was 89.7% versus 86.9% with the placebo arm. And recently, at 60 months, the interim analysis showed that this survival benefit was there at 60 months of interim analysis. So NCCN and other guidelines, they incorporate the pembrolizumab in the neoadjuvant therapy for the triple-negative breast cancer patient, and without testing for the PD-L1 expression, as we know that in most of the cancers we get PD-L1, MSI, or certain or other markers to know whether the immunotherapy will work on those tumors or not. But in neoadjuvant therapy for triple-negative breast cancer patient, regardless of the PD-L1 status, we advise patient to get pembrolizumab. So the next is if the patients who have residual disease, who do not achieve pathological CR, they tend to behave worse. Their outcome is worsened. When there is a high residual disease burden, their outcomes are worsened. And is there anything that can be done to improve this outcome? There we know in the past there was a trial, predicts trial, in which capecitabine was offered to the patient in triple-negative breast cancer who had a residual tumor burden. As we know, in HER2-positive drugs, we have a lot of targeted drugs to achieve not only the pathological CR, but to offer in the adjuvant setting. As well, we have hormone therapies for the hormone receptor positive tumors, but in triple-negative breast cancer, we didn't have any targeted therapy. So in critics trial, it was seen that addition of capecitabine for 6 months in the patient who
did not achieve pathological CR, addition of capecitabine, it improved the overall survival in those patients. And since then, it was a routine practice for every oncologist to prescribe patient capecitabine if they do not achieve pathological CR with the use of neoadjuvant chemotherapy. So, but it wasn't enough. So, in the last in 2021, the results of the trial of Olympia, they showed that in patients who had germline BRCA mutation positive, if they are given adjuvant PARP inhibitor, the olaparib, there were improvement of overall survival at 3 years, and also there was the distance free event free survival was also improved in the patient who were given the olaparib. And now the NCCN and other guidelines, they all incorporate olaparib as an adjuvant agent for 1 year in all those triple negative breast cancer patients who do not achieve pathological complete response with the neoadjuvant chemotherapy, and they have residual disease. So these both agents, one in the upfront setting, in the neoadjuvant setting, the pembrolizumab, it improved the pathological CR, and in patients who do not achieve pathological CR in adjuvant setting, we have option of olaparib. Yeah, with the addition of these these agents in neoadjuvant and adjuvant setting, now in triple negative breast cancer, it is advised to get the biomarker testing, the PD-L1, although it's not required for the neoadjuvant addition of pembrolizumab, but still it's done if we need it at some later stage or in patients who do not have where we have not given these patients neoadjuvant immunotherapy due to affordability or availability issues. So in later lines, we can advise immunotherapy based on the PD-L1 testing. Tumor infiltrating lymphocytes, it's a prognostic marker, and if available, it should be done. And BRCA testing is important to offer these patients olaparib whether in adjuvant setting or if the patient is having metastatic disease. So now the recommended algorithm at present for the treatment of triple negative breast cancer is if patients, if they achieve post-neoadjuvant therapy, they achieve pathological CR in T1C disease, there's no adjuvant systemic therapy, but if they do not achieve pathological CR, we offer patients the capecitabine for 6 months, or if they are germline BRCA positive, olaparib for 1 year. In patients who have stage 2 or 3 disease post neoadjuvant therapy, in neoadjuvant therapy, the incorporation of pembrolizumab is given, and after if pathological CR is achieved, pembrolizumab is continued for a completion of 1 year, and if the patient have residual disease, the pembrolizumab is continued along with capecitabine if patient is wild type BRCA, and if patient is mutated, germline mutated, then olaparib for 1 year. So to conclude, the early triple negative breast cancer is an aggressive but increasingly treatable with neoadjuvant strategies, immunotherapy and BRCA testing. It has helped us to improve the outcomes in the triple negative breast cancer, and now biomarkers and personalized therapies are there to improve the outcomes of the patient with these aggressive diseases. Thank you. Thank you very much for highlighting about the management of triple negative breast cancer. Any question from these first two presentations? So I will now invite Dr. Karan. You said कि जो neoadjuvant के बाद residual disease है उसके लिए capecitabine is still standard of the practice जो कि बायोमेडिकल चल रही है तो इसके ऊपर recent इसके ऊपर भी जाया जा रहा है कोई और further with therapies इसके ऊपर आई है अभी स्टेज अगर आपने germline testing BRCA testing करवानी है, if patient is BRCA mutated, then we have to give olaparib for 1 year.
But the patients who are unmutated, still we, based on the Creatix trial, we prescribe capecitabine for 6 months. Okay, just to add, if someone is. And now Yes, studies yes. are ongoing with the antibody drug conjugates, sacituzumab, and but still this is not incorporated in the guidelines. But I think in a recent video that I mentioned earlier, that in recent in near future, I think we'll be using antibody drug conjugates not only in adjuvant setting but also in the neoadjuvant setting. Just to add in Professor Foster's comments, if someone has received pembrolizumab as neoadjuvant therapy, keynote 522, that patient is supposed to complete 1 year of, to complete 1 year of pembrolizumab in adjuvant settings. This is something beyond Createx. She told in her trial. Just in the last slide, pembrolizumab, if we use it in a neoadjuvant setting, then we have to give it to complete 1 year. Along This with is the, capecitabine, along with the olaparib. If we are using it in the neoadjuvant setting, then we have to continue. there's a question on YouTube from Professor Vaskoker. So please elaborate the role of CDK4/6 inhibitors in triple positive breast cancer in adjuvant setting. Thank you so much. Thank you for the question. Yes, there is a role. However, it comes down the line. In upfront setting, in early setting, we only use chemotherapy along with anti-HER2 therapy. One. Secondly, if it is ER positive and in metastatic setting, we use letrozole or any other aromatase inhibitor along with dual HER2 blockade. On progression, we usually tend to change the anti-HER2 part. However, in the later stages, when we are left with limited options, at that time we can use abemaciclib in combination with hormone therapy and anti-HER2 therapy. Thank you. Thank you, sir. My last question is from Dr. Abbas. It was a really nice presentation. I have been mesmerized with the things and how the drugs are coming up day by day, and there are so many trials in it. Actually, I want to ask you in the HER2 positive patients, if the patient is not on dual therapy in the neoadjuvant setting, is there any role that once the patient has, even on single therapy, the patient has not has achieved this pathological complete response, there is no tumor in the biopsy, and clinically as well as pathologically, is there any role that in the adjuvant setting we have to add two therapies for the better survival benefits, or we have to have continue on the same previous neoadjuvant single dose therapy? This is my question. Conventionally, we have been trying this. We have been using this because introducing TDM1 in adjuvant setting where the patient has not achieved pathological complete response, the cost of the therapy becomes very high. There is certain scheme or some discounts available for the dual anti-HER2 blockade, but there is no discounts available from the company for TDM1. So sometimes, and in the previous times, we were using dual HER2 blockade. However, there is no evidence of introducing when we use single HER2 blockade. There was no pathological response. We have to, according to evidence-based medicine, we have to switch to TDM1 whether we use single or dual HER2 blockade. Patients who achieve complete pathological response with the use of single agent HER2 blockage, there is no use of adding the double blockage in the adjuvant setting. As the patient, it has like if patient achieves pathological CR, it means the patient disease is quite responsive to a single agent, and so it's more it's as beneficial as if you give the dual agent to this patient. I have two questions for Dr. Abbas. First, as we're moving towards some sort of de-escalation of chemotherapy as well, so there is a little debate about the very teeny cancers, these are like 1 PA cancer, 5.5 centimeter cancers. So you talk about the triple positive, hormone receptor positive, and HER2 positive cancers. So we are already using a dual blockade. If we use a dual blockade for HER2 cancers, can we skip that group from chemotherapy? Yeah, thank you so much. Thank you for highlighting this part.
when it is T1A disease, we usually skip the chemotherapy, and if hormone receptor is positive, we right away jump to the anti-HER2. We can, or it's the benefit of adding anti-HER2 is also questionable here, but it's a high-risk disease. We tend to give anti-HER2 along with hormone therapy when it is T1A disease. So the second question you said, Yes. Recently, last year, there was a publication in which it was tested that if we omit the carboplatin block, if we are offering dual agent HER2 blockage to a patient, and if we omit the carboplatin from this, the results were like similar while giving the dual agent. But still we are using the, especially in the elderly patients. So there are certain de-escalation depending on the patient status. Like in elderly patient now, what we are doing is if patient can afford dual agent blockage, we only giving the taxanes to this patient, not the carboplatinum, because there was no benefit of giving the carboplatinum to this age group. And likely the trials are ongoing. Again, I'll say that and HER2 may come upfront, and then we'll be able to skip the other agents, chemotherapeutic agents in this group. the second question was, you said TDXD is as well as Destiny 05 trial is comparing the TDM1 versus TDXD in the adjuvant setting for the residual cancers. Is there any role for if we try this, especially TDXD in the neoadjuvant settings for their patients? The trials are still underway. The results have not come out yet. Okay. But the TDM1 trials, they were not supportive because it was not cost effective, and the dual HER2 blockade was doing fine in that setting. So TDM1 is not recommended in upfront setting or neoadjuvant setting. However, the TDXT trials, they are still undergoing, and we don't know about the results. Okay. Our next guest speaker is Dr. Tahir Bashir. He is working as the head of the Oncology department at Faisalabad Medical University. An experienced medical oncologist with special interest in systemic therapies for advanced and metastatic breast cancer. He will be sharing the current updates in management of metastatic breast cancer. Thank you. Good morning, everyone. I'm thankful to Professor Dr. Ahmad Qureshi and his wonderful team for this invitation and opportunity. These are my disclosures. Although Dr. Abbas has covered a lot of my topic, that is not kind of a good gesture to a guest speaker. Let's discuss what are the goals of treatment of metastatic breast cancer. Goal in oncology is always survival. Historically, it's been survival, and now it is survival, and future is also prolongation of survival or overall survival. And what else? Improvement in quality of life by reducing cancer-related symptoms, minimizing toxicity of therapy, delay time to chemotherapy, and increase progression-free survival. There are two endpoints or two things which are most commonly used in oncology: overall survival and progression-free survival. Progression means कि कब तक आपकी disease patient जो है वो stable disease के साथ रहता है और disease आगे progress नहीं करती, इसलिए मुख्तलिफ तरह की terms यूज होती हैं: progression free survival, even free survival, even relapse free survival. There are certain prognostic factors in metastatic breast cancer. Relapse-free interval more than 2 years is considered more favorable. Site of disease like bone, lymph nodes, soft tissues, or couple of regions in any viscera that is considered a low-risk disease, or lymphocytic lung metastasis or leptomeningeal carcinomatosis. Significant liver metastasis with associated liver dysfunction carries poor prognosis. Subtypes we have already discussed. Luminal A have good prognosis. All the tumors which have ER positive have good prognosis as compared to ER negative disease. HER2 positive has best prognosis with therapy, and previous adjuvant therapies and prior therapy for metastatic breast cancer are also contributing factors towards prognosis of patient. What we will do, we will touch workup
HER2 positive metastatic breast cancer, endocrine therapy for HR positive metastatic breast cancer, chemotherapy and ADCs, and a bit of palliative care or bone directed therapies in patients suffering from bone metastasis. Many surgeons are sitting in the room just not to keep things that monotonous. Uh, do we do biopsy at the time of recurrence? Sir, any thoughts? पीछे जो residents or young fellows बैठे हैं, what's the reason to do biopsy? For example, a patient diagnosed with breast cancer, he or she relapses within 2 years or after 2 years of taking adjuvant therapy. What would be the practical benefit of doing biopsy at the time of recurrence? Any thoughts? There are two things. In cancer survivors, it's not always must that any single lesion in lung or liver is always cancer. We do find tuberculosis, sarcoidosis, or many other diseases because we have, many infectious diseases or chronic infections. Another is the tuberculosis. We do find discordance of receptors in 5 to 30% of patients. And ASCO guidelines, they recommend that biology of metastatic disease should be treated rather than treating the previous biology with which patient were diagnosed and patient took the adjuvant therapy. Molecular profiling to guide treatment decision making, it has increasing role. We heard the talk from in last session from a speaker. Historically, chemotherapy was used in metastatic settings. If we talk about last 2.5 decades, from 2001 to 10, there was chemotherapy for metastatic breast cancer, and the available hormonal therapies were tamoxifen and AIs. Now there are a lot of chemo options. ADCs, as discussed by Professor Abbas, are now superseding chemo in many instances. Typically, use sequential single agent. For HER2 positive, what we do is we do HER2 targeted therapies. For ER positive, we have many options like CDK4/6 inhibitors and oral SERDs and other things. And for TNBC, we have ADCs. We have discussed in detail. These were the things which Dr. Abbas also alluded to. This was the kind of algorithm or treatment details in August 2025, and previously things used to change in 5 years, 10 years, but now the algorithms or treatment options are changing after every 3 months or even after 1 month. Previously, historically, for HER2 positive disease, we used to use dual blockade with chemotherapy. And for those who progressed on that, we used TDM1, then tucatinib or HER2 combination in HR positive. Historically, since last 4 or 5 years, we have been like 6, 7 years CDK4/6 inhibitors and endocrine partners, and few mutation specific treatments. And for TNBC, immunotherapy for those who are PD-L1 positive and antibody drug conjugates. But this algorithm has completely changed during last 6 months, or these treatment recommendations have changed. Management of triple-negative metastatic breast cancer, Dr. Kausar has elaborated everything about biology of triple-negative. Among the cancers, among the breast cancer, it is considered the worst. This disease has historically poor outcome, and before the era of immunotherapies or antibody drug conjugates, patients usually used to relapse within 2 years. And after relapse, we do had multiple cytotoxic options, but the duration of response and subsequent responses were very short. Like if we used to give first line chemotherapy, the effect lasted for 12 weeks, subsequent therapy like 8 weeks, subsequent therapy 4 weeks. And our patients diagnosed with triple-negative breast cancer before these targeted therapy used to die within 2 to 3 years or 3 to 4 years. Left part of this algorithm has been discussed by Dr. Kausar in detail. What we do in metastatic breast cancer, first line, we use chemotherapy and immunotherapy for those who are PD-L1 positive, and those who are PD-L1 negative, we use taxanes or other anthracyclines or other chemotherapies can be used. And for BRCA mutation population, those who have germline BRCA mutation, we use PARP inhibitors upfront. Second line, antibody drug conjugate, Dr. Abbas elaborated in his talk about the monoclonal antibodies and their payloads. We use sacituzumab govitecan
And for PD-L1 negative population, eribulin, which is a mitotic inhibitor, can be used. And for, in second line, for all the patients with germline BRCA mutation, we use PARP inhibitors. And later lines, we do have, option of trastuzumab, deruxtecan, or HER2 for HER2 low, and sacituzumab and eribulin are the options later as well. This was a diagram Dr. Abbas explained in his talk what these antibody drug conjugates do. When they get attached to the cells, they get internalized and then they get degraded, and after degradation, they not only after degradation, these broken down products of the cell, and what they do is they additionally kill other cells as well. This is called bystander effect of antibody drug conjugates. And now what's changing in oncology, things are changing every week, rather every day. SN4 trial, this treatment is recommended for first line treatment of metastatic breast cancer, sacituzumab govitecan plus pembro. We do have Dato-DXd. This is also a newer treatment which is recommended for metastatic breast cancer in frontline setting. Single agent sacituzumab govitecan is also an option for first line breast cancer. Metastatic. These three trials, Topion, Breast 2, SN3 and SN4, these are now frontline treatments for triple negative metastatic breast cancer. See how the landscapes have changed. What they have done is they have brought all the ADCs up front, ADCs with immunotherapy up front, and novel ADCs up front like Dato-DXd. Is there a role of ICI in PD-L1 negative when combined with ADC? Yes, there is role. If we combine Dato-DXd with durvalumab, the response rates were, 87%. The issue is how to best sequence these drugs. For us, it's very simple. We don't have ADCs. We also don't have immunotherapy that reasonably available. So whatever is available, we should exploit that in the best interest of the patient. If our patient, they undergo BRCA testing, and if they get PD-L1 testing done, we should incorporate pembrolizumab with chemotherapy, or we should use or tend to use these novel ADCs or whatever is available for our patient. Generally, what our patient get, we rarely see, although we get a lot of BRCA testing done, we rarely see BRCA positivity. But whenever we see BRCA positive, we tend to give PARP inhibitors because PARP inhibitors are registered in Pakistan and are available. Immunotherapy in different kinds and shapes is also available. So what we use to manage metastatic triple negative breast cancer, we use chemotherapy and immunotherapy. At times we use PARP inhibitors. We are still struggling to find a way to use these sacituzumab govitecan or trastuzumab deruxtecan in very few subset of patients. We do get opportunity to use these drugs, but we are not that instrumental. So sequencing is not our problem. For relapse refractory disease, all these drugs are recommended for second line, like sacituzumab govitecan, HER2 or trastuzumab deruxtecan. And this trastuzumab deruxtecan, this is a wonder drug. This is effective everywhere, whether it's HER2 low, HER2 ultra low, HER2 positive brain metastasis. In breast cancer, the most popular drug at this point in time is T-DXd. It has been used everywhere in triple negative, in few cases of hormone receptor positive, and in many cases of HER2 positive. All the convenience comes with certain bothersome things. These drugs are toxic. They have, spectrum of toxicities, cardiotoxicity, myelosuppression, interstitial lung disease.
very bothersome nausea and vomiting, diarrhea, ocular toxicity, and last but not the least, financial toxicity, because that is the major toxicity we face in our part of the world. Because financially, if we are not unable to afford these drugs, then I mean these toxicities, they probably don't matter for us. To mitigate these toxicities, there are certain strategies for ADCs. Dose capping is one of the things. Capping of duration is another strategy. Response guided dosing or fractionated dosing. These are certain strategies which we will follow for these ADCs when we will use, but all these things are being used for other targeted therapies or for other cytotoxic therapies. Management of HER2-positive metastatic breast. This was, I mean, people used to say it ugly, but now it's not that ugly since the evolution of those wonderful fancy treatments which Professor Dr. Abbas has, I mean, told us in detail. No, this category of cancer, it carries best prognosis, but with the available therapies, if someone can afford all those fancy anti-HER2 blocker, dual anti-HER2 blocker, TDM1, and the novel N-HER2. This portion Dr. Abbas has covered in his talk, HER2 positive, HR positive disease. This is a different subset of disease in which recent introduction of patina trial was something to incorporate CDK4/6 inhibitors with anti-HER2 agents, and these patients are surviving longer. And DB09 study, trastuzumab deruxtecan plus pertuzumab represent an effective first-line treatment for patients with HER2 positive advanced metastatic breast cancer, regardless of any PAC3CA mutation. So what we do, we give dual anti-HER2 blockade with taxanes, and then we keep on, giving these drugs as maintenance therapy, and those who are ERP or positive, we can incorporate patina trial as well as a part of maintenance strategy. This is recommended in the ISMO guidelines. And there is a long series of trials for maintenance of this category of disease, TB09, the method trial, and continuation of maintenance. Patina similar for triple positive disease, HER2 climb 5. This is something in which novel TKI, which is cartocatinib, this is anti-HER2 TKI, another class of drug which targets this target. HER2 climb conclusion is the addition of tucatinib to first-line maintenance therapy with HP demonstrates statistically significant and clinically meaningful PFS benefit. EMETHA is another trial in which they use TDXD as an induction therapy for metastatic breast cancer, triple positive breast cancer, and then later on they tend to use FESGO or combination of these drugs with endocrine therapy. So this is a kind of algorithm which is an evolution for triple positive disease. We start from THP followed by HP maintenance. We can incorporate TDXD, and on the right side, Destiny Breast 9 data followed by DMETHER, HER2 climb, Patina, and Anavo 122 trial. So this was very simple algorithm. Couple of years back, dual anti-HER2 chemotherapy, disease progression, TDM1, disease progression, other options. Now things have become very complex after DBO1, 3, 4, all the data, and particularly all the updates presented in ISMO 2025, ASCO 2025, and SABCS 2025. Trastuzumab deruxtecan plus pertuzumab is the frontline therapy to begin with. What are the second line and third line? Let's try to negotiate this question. HER2 climb, tucatinib, trastuzumab capecitabine versus trastuzumab capecitabine. It improved overall survival. NALA trial is an option for this patient population. And now our approach is, one can opt two approaches. One is trastuzumab, pertuzumab taxane.
One can add for positive, ER positive, can add palbo, patina regimen, followed by, after every progression, you can switch to trastuzumab deruxtecan and then tucatinib and other TKIs. And if you start from trastuzumab deruxtecan and pertuzumab, then the other options remain like TDM1, tucatinib based therapies, they remain a choice. For brain metastasis, we all know that brain metastasis is very common in HER2 positive and triple negative breast cancer. We are aware of the DPO 1, 2, 3 data that two drugs which are very useful in this patient population are trastuzumab deruxtecan and tucatinib. Historically, we have had combination of trastuzumab, pertuzumab, TDM1. Now we have TDXD and tucatinib. So these are 3-4 wonderful options to control these drugs. If we talk about the trials, we can give reference of DBO 1, 2, 3 pooled analysis, Destiny West 12 with TDXD, HER2 client with GTC, HER2 client 2 with tucatinib and TDM1. These are the options for this patient population with CNS metastasis. And there remains a strategy if patient progresses within CNS, if you fix that clone, then an extracranial disease is in control, you can continue with the anti-HER2 backbone. HER2-directed therapies are also toxic, particularly interstitial lung disease with TDXD and cardiac issues with conventional anti-HER2 blockade. We monitor these patients carefully while treating. Management of hormone receptor positive, HER2 negative metastatic. This presentation was actually comprised of 300 slides. It was an educational module for medical oncology trainees, and it used to take 90 minutes to cover these slides. What I have done is I have selected only 120 slides out of this, and good news is I'm going to finish in 5 minutes. Optimal first-line therapy for hormone receptor positive HER2 negative metastatic disease. We are all aware of these trials with palbociclib, ribociclib, and abemaciclib. These are the frontline treatment. We welcome Lieutenant Colonel Dr. Sameed and Dr. Sohaib Nadeem for attending. We welcome here, and we thank them for attending back-to-back meetings. They just landed from Karachi and they came here to this meeting. Decisions about first-line treatment in endocrine-sensitive disease, selecting the right CDK4/6 inhibitor, differences in patient population impact, results from phase 3 trials. Treatment should be individualized for each patient's unique situation, underlying patient characteristics, cardiac status, liver enzymes, GI condition, disease burden, genomic mutations, duration of disease control. Right choice, Padma study, Amber trial, and Abigail trial. These were the things previously we used to discuss things. The patient who present with visceral crisis, they need chemotherapy upfront. Later on, we can consolidate with CDK4/6 inhibitor and endocrine partner. But these trials, right choice, Padma trial, Abigail, and Amber trial. Now we have enough of evidence from phase 3 clinical trials and real world that CDK4/6 inhibitors and endocrine therapy is equally effective for patients with heavy burden metastasis or visceral crisis. But this is not true for every case. If you have very young patient, very aggressive disease, highly symptomatic, one can still try chemotherapy. So conclusions are multiple studies have now shown that endocrine therapy plus CDK4/6 inhibitors result in improved PFS compared to mono or combination chemotherapy. Primary ET resistance with PET3 mutation. Therefore, now it's a growing trend to get an NGS on tissue or a liquid biopsy upfront, or at least check PIK3CA mutation upfront due to the incorporation of enovarosab after an AVO 120 trial and frontline treatment of this patient population. Clinical utility of agents targeting PIK3 AKT mTOR pathway. These are few complex algorithms. One thing
to note is AI or fulvestrant plus CDK4/6 inhibitors, or in PIK3CA positive population, fulvestrant, palbociclib, and erlotinib are the front line. And then we have, in each category of these diseases, triple-negative metastatic breast cancer, HER2 positive or ER positive, we have 4 or 5 lines of established treatment. And those patients who used to die within couple of years after diagnosis, they are, surviving for 4, 5, 6, 7 years, rather 10 years down the road. And now people are trying to design trials, particularly in ER positive and HER2 positive population, and they are aiming for cure. And people are, working on to define new endpoints that when these patient populations can be labeled as that these folks have achieved cure from this disease. And these algorithms, they are becoming more and more complex as the more data is coming in, oral SERDs. These are oral treatments like we are very familiar with tamoxifen, raloxifene, etc. They are selective estrogen receptor modulators. They are estrogen agonists in endometrium and antagonist in breast. And oral SERDs, these are selective estrogen receptor degraders. These are a new novel. Fulvestrant was historically in use since last 1 decade, but now there are many agents in this class, and these are trials with these agents, particularly Emerald, Amber, Evera. And these drugs are more useful with ESR1 mutation. We all know that ESR1 mutation evolves as a resistance to initial endocrine therapy. And if we try to make an algorithm today for ER positive metastatic breast cancer, first line is AI or fulvestrant plus CDK4/6 inhibitor with ovarian function suppression in premenopausal, or if someone is PIK3CA mutated, ET refractory, we have ELAVO 120 data as well. And we are supposed to do NGS or biopsy or ctDNA upfront and on every progression, because we need to look at PIK3CA mutation later, AKT mutation or PTEN mutation or ESR1 mutation, in which particularly elacestrant or other oral SERDs are effective. And third line and beyond, we do have same kind of ADCs, sacituzumab govitecan, trastuzumab deruxtecan, Dato-DXd, and a lot of other options. And Bolero 2, by the way, everolimus remains an option at the bottom, and now there is more and more data of everolimus being combined with other agents as well, with fulvestrant. These oral SERDs are like elacestrant, imlunestrant, and giredestrant are oral pills, and they control disease for years in this patient population. Communication with the patient is very important in oncology. We need to persuade the patient and families for informed decision making, because these decisions are complex, these are cost involving, these are bothersome for the patients and families. And palliative care remains an option for all the non-responders and all those who suffer from these progression after fighting with these nasty diseases. Metastatic breast cancer is a journey as of today, not a destination. So your patient, they feel exhausted, they feel, helpless while navigating through these complex algorithms, while getting updates about these drugs, while knowing the cost of these drugs, and while facing the toxicity. So we need to, support our patient with compassion, and at the same time, we need to, work to reduce the health disparities. Thank you so much for the patient listening. Thank you, sir, for the very detailed discussion on the metastatic breast disease. Now we have our next speaker, who is a medical oncologist who has been closely involved in delivering oncology care in resource-limited settings. We have Dr. Fariha Sheikh. She will highlight the practical and system-based challenges faced
in the oncology practice in our region. Assalamualaikum everyone. I am Dr. Suria Sheikh and I am currently working as an assistant professor at Jinnah Hospital, Lahore. First session talks and the medical oncology talks before my talk, they have already set a stage that this talk is about frustration of all of us who are dealing with these complex cases. Because we are talking about guidelines, we are talking about algorithms, we are talking about neotherapies, we are talking about the changing updates day and night. We just get up in the morning, get an email that this new update and this is the first line treatment in triple negative breast cancer. And this is the first line treatment in HER2 positive breast cancer. But we are standing still at a 0 point, that we are still struggling with early diagnosis, we are still struggling with screening and all those fancy things. They seem unapproachable for our part of the world. So I'm going to just briefly touch on the current breast cancer burden, diagnostic limitations, our pharmacological gaps, our surgical oncology needs, and we do need multidisciplinary care because we need to bridge all these gaps so that we are able to work within our own limitations. And thirdly, research and our own policy and our own data so that we are able to manage our patients within our own limitations. So this is all known to us that breast cancer is basically the most common cancer in females across all over the world. And the incidence has risen in our part of the world. But one more thing which is to be highlighted, that in Pakistan and in South Asian countries, the average age at which our female population is presenting is at much younger age group as compared to the Western world. Though we don't have our registries or any countrywide data, but with limited registries which are available from hospital-based databases, we know that our patients, they present in 40s. The average population with breast cancer which is presenting in our part of the world, that these females are in their 40s. And in Western population, this average age of presentation is in 50s. So we are at a 1 decade earlier as compared to the worldwide data. Secondly, most of our patients, they present at advanced stages. So the world is talking about de-escalation of therapies, de-escalation of surgical therapies, de-escalation of auxiliary management, but we are still struggling with advanced stages, with inoperable patients at the presentation, and mortality is not high because we don't know the things, we don't have knowledge. We all have knowledge. Since we are attending these lectures, we know what is NGS, we know what are the latest advancements, but the frustration is that this is not the aggression or aggressive biology of the disease. This is basically limitation due to limitation of our resources and lack of infrastructure which is not available in our part of the world. So what are the diagnostic challenges? We don't have a national cancer screening program. A very small chunk of patients which present earlier to our clinics or our hospitals, they are, we can say, because they are urban centralized, वो बड़े शहरों में रहते हैं, they get diagnosed because of some opportunistic tendencies कि जी बेटी को था तो उसने करा लिया, या कोई फैमिली में डॉक्टर था या किसी ने सुन लिया, तो इस वजह से मैमोग्राम अर्ली स्क्रीनिंग की बात मैं कर रही हूँ. So majority of them, they present at advanced stages, and some of them, even if they present, but they don't know whom to report. वो gynecologist के पास जाते हैं, वो local GPs के पास जाते हैं, जो most of the time they just
शट देम ऑफ है, कुछ नहीं है, फाइब्रोएडिनोमा है, कुछ नहीं है, इस एज पे कुछ नहीं हो सकता. सिंस वी आर गेटिंग पेशेंट्स एट यंगर एजेस, so we need to ring the bell in all of these communities. हम आपस में तो बात करते हैं, सर्जन बात करते हैं जो ऑन्कोलॉजिकल केयर में हैं, बट वी डोंट एजुकेट इवन टू आवर डॉक्टर्स कि उन्होंने किस बात पे अलर्ट होना है, कौन सा पेशेंट है जिसको प्रॉपर रेफरल एंड प्रॉपर वर्कअप की जरूरत है. देन कम द इमेजिंग मोडेलिटीज. मैमोग्राम्स, दे आर नॉट अवेलेबल इवन इन लाहौर. जितने टर्शरी केयर सेंटर्स हैं वहाँ पे हमारे पास मैमोग्राफी मशीन्स नहीं हैं. So since we are talking about advancements, हम तो बेसिक्स में ही बहुत पीछे हैं. फिर जो इवन जितने बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ओकाड़ा, साहिवाल, मतलब साइड के जो डिस्टेंस है जिनको हम कहते हैं कि जी दे आर बिगर सिटीज, और जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस की भी बात हो रही है, दे डोंट हैव इवन दीज बेसिक फैसिलिटीज. इवन अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रू कट बायोप्सीज, इट्स अ स्ट्रगल फॉर अ पेशेंट. अगर किसी ने वहाँ पे अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रू कट बायोप्सी करनी है, आई बिलोंग टू साहिवाल, मैंने वहाँ पे किसी पेशेंट को बताना हो कि जाओ अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करा लो, वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल से नहीं करा सकता. तो इन दैट केस हमारी जो लिमिटेशंस हैं, दे आर मोर फार बियॉन्ड जो वेस्टर्न वर्ल्ड की लिमिटेशंस हैं. फिर अगर कुछ फैसिलिटीज इफ दे आर अवेलेबल, देयर कम द फाइनेंशियल बैरियर्स. वहाँ पर जो है वो और जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के बहुत सारे ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं जो कि शायद हमारी काउंसलिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, या हमारी एजुकेशनल जो कह लें कि एडवर्टाइजमेंट्स इतनी अच्छी नहीं है कि वो पेशेंट पहले ही ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी पास पेशेंट जो कि कह लें कि जिनको ट्रूली वी नीड टू ट्रीट दीज पेशेंट्स, वो पहले उधर से होके हमारे पास इस सिचुएशन में आते हैं कि वी जस्ट से देम कि आप सपोर्टिव केयर पे चले जाएं. Then what are the laboratory and pathology challenges? Majority of our tertiary hospitals, they don't have facilities of ER, PR and HER2. हम पहले उनकी सब ग्रुप टेस्टिंग करेंगे तो हम एडवांस ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे. पेशेंट बायोप्सी करा के आता है एबीसी लैब से, आके हमसे कहते हैं कि जब आपने ER, PR कराना है, या तो आप स्लाइड ले आए या बायोप्सी दोबारा करा लें. मुझे मैंने पता नहीं कितने पैसे मुश्किल से पैसे कलेक्ट करके बायोप्सी कराई है, डॉक्टर साहब मुझे बार बार टेस्ट कराने के लिए भेज दी, एंड वो जाता है शिकायत लगाने, और फिर हम टर्मिनेट हो जाते हैं कि टेस्ट ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं और सिर्फ टेस्ट पे टेस्ट कराए जा रहे हैं. इसी तरह से एनजीएस ब्रैका, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं. एनजीएस ब्रैका जो सुबह मॉर्निंग में भी मॉर्निंग के सेशन में बात हुई है, वी डोंट हैव आवर ओन डाटा. हमें पता ही नहीं हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम ऑफ म्यूटेशंस एग्जिस्ट करता है. जो भी हमें टेस्ट करके, या जो हमारी टेस्ट्स हैं, जो म्यूटेशंस हैं, दे आर ऑलवेज कंपेयर्ड विद द वेस्टर्न पॉपुलेशन. हमारे पास ब्रैका की म्यूटेशन का रिजल्ट आता है ब्रैका पॉजिटिव बट वेरिएंट ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस. वी डोंट नो कि वो शायद हमारी पॉपुलेशन के लिए सिग्निफिकेंट ही हो. सो हमारे पास कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस या रजिस्ट्री नहीं है कि हम कहें कि जी हमारा डिजीज पैटर्न क्या है, हमारा डिजीज बर्डन क्या है, कि हम उसके अकॉर्डिंगली अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान कर सकें. देन कम फार्माकोलॉजिकल चैलेंजेस. हमने अभी डॉक्टर ताहिर, डॉक्टर कौसर, डॉक्टर अब्बास की टॉक्स में बहुत सारी दवाइयों की बात सुनी है, TDXT, सेरसिटुजुमैब, एफएमट्रेस्टुजुमैब, लेकिन वी आर मेजॉर ओनली शायद 0.1% ऑफ आवर पेशेंट पॉपुलेशन इज एबल टू अफोर्ड दीज फैंसी एंड ड्रग्स. हम अभी कीमोथेरेपी के अरेंजमेंट्स पे फंसे हुए हैं कि पेशेंट को डॉक्टर मिलेगी या नहीं मिलेगी, पेशेंट कार्बोप्लेटिन भी अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता. दे कम फ्रॉम फार ऑफ एरियाज. सारी जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं, दे आर कंजेस्टेड इन बिगर सिटीज. DG खान वाला पेशेंट है, DI खान वाला पेशेंट है, उसको तो पहुंचने में ही बहुत प्रॉब्लम होगी कि वो यहाँ पे सेंटर में पहुंच जाए. सारे पैसे तो वो आने जाने में लगाएगा, उससे बेहतर है वो कहता है मैं वहीं पे ठीक हूँ, जो भी मिलता है ठीक है. So these are all our limitation कि हमें पेशेंट की जो ट्रीटमेंट प्लानिंग है उसको वीकली प्रोटोकॉल हम नहीं दे सकते. अगर एक पेशेंट है जो हर हफ्ते कहीं 4 घंटे का सफर करके आ रहा है, तो इफ वी आर प्लानिंग टू गिव हिम वीकली कीमोथेरेपी, तो वो उसके बेशक उसको दवाई मुफ्त में मिल रही है, लेकिन वो आना और जाना उसका कॉस्ट करता है 10-12 हज़ार रुपया एक चक्कर. तो वो हमें जो है वो अपने रिसोर्स लिमिट्स में रह के पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करना है कि पेशेंट आ और जा सकता है या नहीं सकता, वो कैसे अपनी ट्रीटमेंट को कंप्लीट करेगा. देन हम इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं. अपना डाटा, वी डोंट हैव एनी डाटा. हमारे पेशेंट्स की कीमोथेरेपी की
टॉलरेंस कैसी है. वी नॉर्मली सी कि हमारे पेशेंट फुल डोज कीमोथेरेपीज नहीं टॉलरेट करते. जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, गैस्ट्रिक कैंसर में फ्लॉट की बहुत बात होती है, बिकॉज ये इस पे हमारी सर्जन और ऑन्कोलॉजिस्ट की बड़ी वो होती है. तो सर्जन हमेशा लिख के भेजते हैं इसको फ्लॉट दे दें. अब हमें पता है कि हमारा पेशेंट फ्लॉट टॉलरेट नहीं करेगा. देयर इज अ चंक ऑफ पॉपुलेशन जो बहुत अच्छे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं, उनकी फिजिकल वेल बीइंग हेल्थ बहुत अच्छी है, दे कैन टॉलरेट. बट मेजॉरिटी ऑफ आवर पेशेंट्स जिनकी हाइजीन अच्छी नहीं है, जिनके लॉजिस्टिक्स बेहतर नहीं है, जिनके पास खाने पीने का और सपोर्ट जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है, तो यू विल नॉट टॉलरेट दोज इंटेंस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स. तो इसलिए वी नीड टू डेवलप आवर ओन गाइडलाइंस, वी नीड टू डेवलप आवर ओन डेटाबेसेस कि हमारे पेशेंट्स जो हैं वो कितनी कीमोथेरेपी टॉलरेट कर सकते हैं. देन देयर आर नो एमडीटीज. सर्जन के पास मरीज पहले आएगा, वो सर्जरी कर देगा. ऑन्कोलॉजिस्ट के पास मरीज पहले आएगा, वो पहले कीमो लगा देगा. कोई डिस्कशन नहीं है. और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी नियोएडजुवेंट थेरेपीज है, क्लिपिंग नहीं है, ट्यूमर गायब हो गया, एंड अब वी आर एट क्या करें. इसी तरह से पेशेंट सर्जन के पास पहले जाता है विदाउट बायोप्सी, एक सीजनल चंक लेके दे देते हैं. वी डोंट नो कि वो उसकी रेजिडुअल है, रिकरेंट है, एक्सिलर स्टेज हुई है, नहीं हुई है, वो उसमें फिर यू कैन नॉट गो विद द रिकमेंडेड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल. उसमें फिर आपको अपना प्रोटोकॉल चेंज ही करना पड़ता है. देन सपोर्टिव केयर एंड टॉक्सिसिटी मैनेजमेंट. बहुत सारी जगहों पे हम कीमो लगा के पेशेंट को भेज देते हैं, दे डोंट हैव एनी नियर बाय फैसिलिटीज के जहाँ पे पेशेंट सपोर्टिव केयर के लिए चला जाए. अगर पेशेंट कहीं 4 घंटे के फासले से है और उसको वहां जाके कोई फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया या कोई प्रॉब्लम हो गया, वो लोकल इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है, दे सेंड देम टू लाहौर के जी आप कैंसर के मरीज हैं, हमने आपको हाथ नहीं लगाना. तो वी डोंट हैव एनी सोशल सपोर्ट सिस्टम. इवन डॉक्टर्स दे आर अफ्रेड कि हमने कैंसर के पेशेंट को ट्रीट नहीं करना. एंड पैलिएटिव केयर सर्विसेज दे आर आल्सो नॉट अवेलेबल. सो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में जैसे हम पेशेंट भेजते हैं, वो एक पेशेंट क्योंकि एक माइंडसेट एक है कि जो लोग रेगुलरली ऑन रूटीन बेसिस ऑन्कोलॉजिकल सर्जरीज करते हैं, दे नो कि उन्होंने क्या करना है, किस तरह से लेके चलना है. लेकिन बाकी है जो एक सर्जन है जो सब कुछ करता चला जा रहा है, वो वहां पे आके आपके प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो स्टैंडर्ड उस तरह से नहीं हम मीट कर पाते जो स्टैंडर्ड सर्जरी भी हमें चाहिए उसके लिए. सो वी नीड टू एस्टैब्लिश स्पेशलाइज्ड यूनिट्स जहाँ पे ज्यादा चंक ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो ट्रीट हों, सो दैट हम एक स्टैंडर्ड की सर्जरी कर सकें. ऑन्कोप्लास्टिक ट्रेनिंग हो, स्टेज असेसमेंट हो बिफोर प्लानिंग एनी ट्रीटमेंट, and there should be a coordinated care. So what is the way forward? अगर हम एक हाई लेवल की एमडीटी नहीं कर सकते तो कम से कम इतने एजुकेशनल सेशंस कर लें कि हमें पता हो कि किस मरीज को पहले क्या करना चाहिए या क्या मिलना चाहिए. जहाँ पे एम्बिग्विटी हो, we need to discuss. Ideally there should be institutional MDTs. Diagnostic services should be improved. Palliative care and supportive services should be incorporated. And most important कि जितने पेशेंट्स हम हॉस्पिटल में टर्शरी केयर में देखते हैं, they are just tip of the iceberg. हमें नहीं पता कि बाकी पेरिफेरीज में कितने पेशेंट हैं. तो जब तक हमारे पास we don't know the exact cancer burden, we cannot plan. जितना भी हमारे पास जो हम पॉलिसीज बनाते हैं, they are reactive. ये इस अस्पताल में इतने आ गए, इस अस्पताल में, they are not proactive policies. So we need to work on that as well. कि सब लोग मिलके कोलैबोरेटिव एफर्ट करें, सो दैट वी आर एबल. अगर नेशनल लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है तो इंडिविजुअल एफर्ट जो है दैट शुड बी कोलैबोरेटिव, सो दैट वी आर एबल टू कलेक्ट आवर ओन डाटा. देन आउटकम्स शुड बी रिपोर्टेड कि मैं 100 पेशेंट्स ट्रीट कर रही हूँ तो उन 100 पेशेंट्स का आउटकम क्या है, सो दैट हमें पता हो कि मैंने ट्रीटमेंट अगर प्रोटोकॉल फॉलो किया तो इज इट रियली वर्किंग और नॉट. और देन फिर हम कोई क्लिनिकल ट्रायल या एडवांस उसमें जा सकते हैं जब हम अपनी बेसिक्स ठीक कर लेंगे. सो डिसेंट्रलाइज स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स अगर हम कर लेंगे कि ठीक है नेशनल लेवल पे नहीं है तो अपने अपने लेवल पे जो जिसको एजुकेट कर सकता है, इंस्टीट्यूशनलाइज एमडीटीज अपने अपने इंस्टीट्यूशन में शुरू करें. देन लोकल कैंसर रजिस्ट्रीज बनाना शुरू करें, एंड देन बाद में उनको पेशेंट हमें इनकॉर्पोरेट कर लें अगर नेशनल लेवल पे हम नहीं जा सकते. और ट्रेनिंग मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ साथ जनरल सर्जन्स जो जीपीज हैं उनको भी एजुकेट करने की जरूरत है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट पॉइंट
point of contact for majority of the patients. उन्होंने patients हमारे पास भेजने हैं because patient पहले दिन उठ के oncologist या cancer surgeon के पास नहीं आता. So we need to build a sustainable oncological journey, and we should work together to bridge all these gaps so that we are able to meet all those standards which were talked in the previous presentations. Thank you. और ये बताएं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया आपकी स्लाइड बहुत अच्छी है। मैडम भी पूछ रही, मैं भी, ये भी सब पूछ रहे हैं। ज्यादा करके बता दीजिए। हाँ, it has a visual impression, ना? तो बहुत visual अच्छी। impression। Any other questions? बाकी वो चीनी में पूछ रहा है। आपकी बहुत अच्छी। क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक ओपिनियन है, एक थॉट है कि एक्चुअली जितने भी हमारे जो गैप्स हैं, दिस इज बिकॉज वी डोंट हैव एनी नेशनल गाइडलाइंस। क्योंकि अगर हमारी कोई नेशनल गाइडलाइंस हो, हर एक को ये पता हो, सर्जन को, ऑन्कोलॉजिस्ट को, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को, एवरीवन शुड नो कि हमने, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है ब्रेस्ट कैंसर के साथ आता है, हमने उसको किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से लेके चलना है। कोई दूसरा पेशेंट आता है किसी और लाइक किसी भी मैलिग्नेंट इशू के साथ, उसको हमने किस तरह से लेके चलना है, हमारी क्या गाइडलाइंस होंगी, पहले हमने बायोप्सी करवानी है, उसके बाद कैसे लेके चलना है। दूसरा, हमारे पैथोलॉजी की लैब्स को भी, उनकी भी एक मतलब इसी गाइडलाइंस के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से चीजों को रिपोर्ट करना है। तो ही हमारे गैस रिसोर्सेज, नो डाउट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन हमारी जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो शायद ज्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे पेशेंट आउटकम को एज कम्पेयर के रिसोर्सेज। उन्हीं रिसोर्सेज को अगर हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से यूज करें तो शायद हमारी जो है ये सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो सके। थैंक यू। Our next guest speaker is Dr. Ihsanur Rahman, medical oncologist with expertise in managing complex and treatment-resistant breast cancer cases. He will discuss the updates in management of resistant breast cancer cases. Thank you very much for inviting me in this very educational conference. K is my mother institution. I've been trained here. I think at the end of this session, my job is very easy because I think you have learned all about the breast cancer. If you give me an opportunity or liberty to summarize what I think you have seen or learned, should I say learned or seen? तो मैं अपनी टॉक को जितना भी आपने इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जाना है उसको समराइज करूंगा rather than I go through the data and scroll all the slides which are going over your brain or head. Okay, when we talk about resistance, it means we are dealing with a cancer cell which is not listening to our treatment, our chemicals. I use in my practice the word naughty cell, or I use that the cell is misbehaving. So these misbehavior, we need to identify where is the problem, as if our child is misbehaving, rather than shutting him down or उसको डांटने से बेहतर है कि हम cause को देखें कि what is the cause of this behavior. So resistance can be intrinsic or primary. वो पहले से ही resistant था, or it can be acquired during the course of the treatment. Basically, sorry, आपने learn किया कि we have 4 different types of breast cancer, which are exhibiting like only ER positive, HER2 positive, or only HER2 positive or triple negative. So 4 basic types को आपने ध्यान में रखना है. It means we have these 4 targets जिनको हम target कर सकते हैं to deal with the breast cancer. Now coming towards the mechanism of resistance, there are certain mechanism of resistance, means there are some gene alteration, there are some overexpression of some enzymes, HER2 overexpression, TP53 mutation, and protein glycoprotein, phosphoglycoprotein overexpression. What happened with this all mutations or change?
the cell become resistant and learn to live in a bad environment. Now, if we talk about the specific resistance in terms of the specific therapy, so in endocrine treatment, ESR1 is the most common mutation. And in chemotherapy, the cells just expelling those chemicals out of their environment, not listing. And in HER2 case, there's an overexpression of PIK3 mutation. In CDK4 or 6, there is a loss of RB function. In immunotherapy, there is low mutational burden. So how to overcome these endocrine resistance? We need a dual blockade, which is CD4 or new blockade, which is CDK4 or 6. We need some next generation agents, which are selective estrogen receptor degraders or proteolysis targeting chimers. So previously, all those, the basic one we are using, tamoxifen and others are selective estrogen receptor modulators, but they are degraders. They degrade these overexpression of these ER cells. Because I'm just scrolling down because we have gone through all these things. So if there's a new serum estrogen receptor degrade, if we see that it can give an advantage of 30% risk reduction of the cancer. Managing HER2 resistance, as we have learned, we can use dual target trastuzumab or pertuzumab, or we can use antibody drug conjugates, which is Enhertu. Triple-negative breast cancer challenges are because it has got aggressive biology and they are limited target, and how to deal with this is that we use immunotherapy, we use PARP inhibitor if they are BRCA positive. PI3K mutation in terms of our hormone positive patient, and how these mutation can affect the cells has gained the property of anti-apoptosis, angiogenesis, and metastasis, and all these factors lead to a resistant cancer. There was a talk in the morning in which one of the doctors ever mentioned about the liquid biopsy and the genomics and tumor infiltrate cells. So there is multi-omic approach going on with the machine, with incorporating a machine learning to predict those markers early and act on it. This is an era of AI. So if we adopt that artificial intelligence in every step of the breast cancer pathway or treatment, we can get better results and better treatment outcome. This is just a few points and a summary. There is an emerging research on podophytotoxin, which are plant-derived. What they actually do, they bind with this molecule, it goes into the cell, and they degrade or downregulate the PGP expression, which is in terms a molecule which promotes the cell resistance, and we get the better results. Now the key summary is, we are dealing with 4 types of breast cancer: hormone positive, triple negative, HER2 positive, or hormone positive, or HER2 positive. So those are the targets which we use to treat. And when the resistance comes, how we can deal with the resistance? We have learned about these new molecules, dual target therapy. Now, there was a very good presentation given by Dr. Freehart just before me. And she was talking about what are the challenges in the treatment of the cancer. So I have been trained in KE. In 2000, we have computerized the data of more than 25,000 patients from 1961 to 2000 and develop a software. सबसे आसान बात यह है कि अपना इंस्टीट्यूशन का डेटा, अपना डिपार्टमेंटल डेटा, आप उसको किसी भी फॉर्म की सूरत में आप उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू करते हैं. Second thing is,
as an oncologist or in Mayo Hospital, there are many medical wards, surgical ward, ENT, gynae, but there is only one oncology ward. It is impossible humanly to do all the MDTs with every single ward. उसमें जो हम करते थे, या मेरी सजेशन ये है कि अपनी डिपार्टमेंटल एंड देन इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन बना दें। सर्जन्स को पता हो कि उसने कौन से स्टेप्स को पूरा करके पैथोलॉजी के बाद, रेडियोलॉजी के बाद ऑन्कोलॉजी को हैंड ओवर करना है। इसका एक सिंपल मेथड ये भी हो सकता है, बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन द डिजिटलाइजेशन ऑफ अ हेल्थ केयर सिस्टम, डिजाइन सो मेनी सॉफ्टवेयर इन द डिजिटलाइजेशन, कि आप एक ऐसा फॉर्म बना लें कि जो फॉलो अप हो सके। द डायग्नोस्टिक वालों के पास, सर्जिकल वालों के पास, वो बेशक उसका प्रिंट आउट निकाल के पेशेंट को दे दें कि ये स्टेप्स हो चुके हैं, अब आप आगे चले जाओ। यहाँ पर कोई, आई थिंक कोई इंस्टीट्यूशनल साइट हो, अब मुझे नहीं पता, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसपे आप लॉग इन करके पेशेंट का सारा पीछे से डाटा या देख लें, या उसने क्या क्या कमेंट किए हैं। एक कॉमन हॉस्पिटल फाइल भी नहीं है, आई थिंक हर डिपार्टमेंट की कुछ अपनी फाइल्स होती हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू दैट डाटा। तो एक क्लाउड बेस्ड फॉर्म बनाया जा सकता है जिसपे आप लॉग इन करके पेशेंट का सारा, इट इज वेरी इजी नाउअडेज, और इसको आप फॉलो कर सकते हो। और ये एमडीटी को, जिसको रिक्वायरमेंट को नेगेटिव तो नहीं करेगा, मैं ये नहीं कह रहा एमडीटी जरूरी नहीं है, बट MDT with all the departments with this much burden, I don't think so it is possible. आप just to interesting case कोई चीज आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन जब आप इस फॉर्म्स को फिल करते हुए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में वो मूव होता जाएगा उसकी हिस्ट्री के साथ, ये पेशेंट के लिए भी आसान होगा, rather than ही वो काम एक बोर्ड के बैग के साथ आए हुए मेरे प्रोफेसर साहब कहते थे वो निकालो जो छुपा के रखा है, वो माल अच्छा है, वो निकाल के दिखाओ, और हम सारे उसके वो देखते जाते थे। दूसरा, द ब्रेस्ट कैंसर, एवरीवन टॉक अबाउट इट, कि वो सबसे बड़ा वो जी हमारा 26% ऑफ ऑल द कैंसर बर्डन इज ब्रेस्ट कैंसर, 90,000 वुमेन डायग्नोज, 40,000 वी आर लूजिंग, 45% इज द एडवांस ब्रेस्ट कैंसर। भाई वो क्यों है? वो इसलिए हैं कि हम कहते हैं कि अपने लिए 5 मिनट निकालें, अपने आप को एग्जामिन करें, और वो किसको कह रहे होते हैं? वो अपनी औरत को कह रहे होते हैं जिसके पास सर पे जाने का वक्त नहीं है, उसने बच्चे भी देखने हैं, उसने हस्बैंड को भी देखना है, और उसने सारे काम करने हैं, और उसी को हम कह रहे हैं कि तुमने 5 मिनट निकालने हैं अपने लिए। हम पिंक रिबन के साथ चलते हैं, हम ब्लू को भूल जाते हैं, ठीक है? इट्स नॉट पिंक, इट्स पिंक एंड ब्लू। तो हमने अपना फोकस, व्हेन आई गिव अवेयरनेस लेक्चर्स, आई फोकस ऑन द मेल्स। तुम बाप हो, भाई हो, बेटे हो, तुम अपने माँ, बहन, खाला को लेकर जाना है, उनका ख्याल रखना है। बहन को कह दिया खाना खिलाता हूँ, माँ को कह दिया सूप ले देता हूँ, नहीं आगे आप अबव 40 है, मैं आपकी मेमोग्राफी करवा देता हूँ। You are more responsible as a male than a female to take care of them, because if you lose a female, you will be losing a family, you will not be losing a person. Sorry, वो थोड़ा सा मेरा हटके इसलिए मैंने बात की, because you have all been told about the treatment, things like this. So digitalization से आपकी आसान हो जाएगी चीजें, वो सिंपल भी हो सकती है, सिंपल गूगल फॉर्म है, कुछ भी, ठीक है? आप उसको बना लो, आप अपने इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस बना लो, सर्जन के साथ मिलकर, पैथोलॉजिस्ट के साथ मिलकर, कि भाई ये तुम्हारा काम है, तुमने करना है। तो ये अवॉइड हो जाएगा, क्लिप नहीं डाला, बायोप्सी कर दी, और मस्टेक्टमी कर दी, एक्सिलरी क्लियरेंस नहीं की, तो ये सारी चीजें अवॉइड हो जाएंगी, और हम वो ब्लेम पार्ट को छोड़ देंगे। Thank you very much. Thank you, sir. Any question from the audience? So with this presentation, we would like to conclude this session. I would like to invite Professor Ahmadullah Qureshi. Sir, please come forward to give away these sheets to the presenter. Sir, कोई नहीं question. comment दे देते हैं। Sure.
मेरा ये डॉक्टर साहब ने जो कहा, डॉक्टर एहसान रहमान ने, it is a very pertinent thing that rather than taking them to dinners and lunch, we rather take them to some good radiological services and get their annual mammograms and make this a habit. Just like that, in October, as everyone is talking about breast cancer, everyone is giving waiver on the mammograms. Maybe at that time we can use that facility in a very effective way. And it is like this. I usually do for myself, for my khalas, for my ammi, and for the rest of my family. I tell them that there is a waiver on it, you can acquire it, you can have your screenings at a very acceptable price, and they don't have to be in the long queues which people want to avoid in public sector hospitals. So we have to promote this word, because as we can spend a lot on everything, we can spend on ourselves also. So this is the take-home message from his talk probably, and he has definitely touched this point very effectively, that we have to advertise it, we have to tell this to our relatives, to the women who are around you, and again, if we keep on repeating it again and again every year, maybe somebody you met on a function and you tell them that, have you been screened this year or not? So probably that is the best thing you can talk about with someone you know very closely. And they have definitely, this word has impact on them, and maybe they don't go for the screening right away, but that stick to their mind. And for the next time when you meet them, okay, they have, oh, you told me that I must have been to the mammograms, but still I'm in the queue. But they have this thing in their mind. Sometimes they will decide it, and definitely they will go. मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि ये एक्चुअली मेरी एक कैंपेन है, पिंक एंड ब्लू, आई एम विद यू। और इसका बैकग्राउंड ये है कि व्हेन आई वाज अ रेजिडेंट, हमने एक फीमेल पेशेंट को देखा, उसका एडवांस ब्रेस्ट कैंसर था, तो हमने उसको मैस्टेक्टमी पे काउंसिल किया। वी स्पेंड 30 मिनट्स, उर्दू पंजाबी हर तरह से उसको हमने राजी कर लिया, और उसने कहा ठीक है। एट द एंड व्हाट शी सेड, आप इसके मालिक से पूछें। उस वक्त मैं रेजिडेंट था, आई वाज यंग, आई कुडंट अंडरस्टैंड। उसने कहा आप इसके मालिक से पूछें। तो मेरे प्रोफेसर थे, ही अंडरस्टैंड। तो उन्होंने कहा ओके। एक बंदा आया, उसको हमने बताया, उसने कहा चल नहीं, उसका हाथ खोल के नहीं। वो चीज मुझे आज तक नहीं भूलती, इसलिए मैं हमेशा एज ए मेल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ और अपने आप को ब्लेम भी करता हूँ अगर मेरे किसी रिलेटिव को, मेरी किसी अजीजा को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो उस स्टेज में। और दूसरा है ये बात जो हम टैबू तो कहते रहते हैं, टैबू है, ब्रेस्ट कैंसर को से कहते हैं कि हराना है, छुपाना नहीं, बताना है। तो ये मेल्स पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान में। जितनी भी वर्किंग वुमेन, even a doctor, I have seen a doctor, I have seen a medical student, 4th year, final year, not telling anybody about their lump and coming with a breast cancer, advanced breast cancer. So ये male की responsibility. I don't believe in pink, I don't believe in October. ठीक है। हमारे पास जितने भी पेशेंट्स, मेजॉरिटी जो पर्टिकुलरली हम अगर ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि सेशन इसका बात की हो रही है, तो जो मेजॉरिटी फीमेल्स आती हैं जिनका अर्ली डायग्नोसिस अब हो रहा है, जिनकी बेहतर ट्रीटमेंट हो रही है, कोई बात हम रिसोर्सेज की बात नहीं करते, लेकिन लोग ले रहे हैं, मतलब HER2 ब्लॉकेज लोग ले रहे हैं। और जो है क्या कहते हैं, जितनी भी हम उनको ये जैसे टारगेटेड थेरेपीज, अगर क्योंकि वही बात है कि थोड़ा सा है इश्यूज है, हमारे रिसोर्सेज का इश्यूज है, बट बहुत सारी चीजें वही जो हम कहते हैं ना कि जो हम करना चाहते हैं वो हो जाता है, उसका कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, तो हो रहा है। लेकिन अब चूंकि सेंसिटाइज हुए हैं, मेल्स भी बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हुए हैं, और अब मेजॉरिटी हमारी जो फीमेल्स आती हैं उनके साथ उनका कोई जवान बेटा आता है,
मियाँ आता है उनका मेजॉरिटी पेशेंट्स के साथ, मतलब ऐसा नहीं है, ये पास्ट में हो रहा था। कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसी भी आती थी जिसके डायग्नोसिस के फौरन बाद जीनिया ने डिवोर्स कर दिया है, घर से निकाल दिया है, बच्चा बहुत छोटा है, बच्चे को भी छोड़ दिया उसके साथ ही। लेकिन अब ट्रेंड्स बहुत ज्यादा, इन सारे कैंपेन्स के साथ जो है ना, ट्रेंड्स बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। अब जो है पेशेंट अगर नहीं भी बताती है, घर में किसी को जरा सी भी भिनक पड़ती है, पता चलता है, वो फौरन लेके आते हैं। मतलब मेरे पास तो जितने मेजॉरिटी आ रहा है उनके अक्सर के साथ, अगर वो एल्डरली हैं तो उनके बेटे आ रहे हैं, और अगर कोई बात है कि वो यंग है तो उनके मियाँ लेके आ रहे हैं। अब मेल्स बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हैं कि उस खातून की बदौलत ही उनका घर चलना है, और वो उनको लेके आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी भी लेकिन वो वाली प्रोपोर्शन मौजूद है, जो कि ये नहीं है कि अब उनको इल्म नहीं है। अब जितना कैंपेन्स हो चुकी हैं ब्रेस्ट अवेयरनेस में, मतलब लाइक अब तो मैं हर साल अक्टूबर में कहती हूँ कि क्या हम रिपीट करते हैं वही बातें, लेकिन हाँ रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि वो जो आपने पब्लिक को सेंसिटाइज किया है उसका इम्पैक्ट आ रहा है। पहले हम कहते थे, और डाटा भी था इसका कि somehow थोड़ा बहुत कि मोर देन 90% हमारे पास मेटास्टैटिक ही आती थी। कभी हम पब्लिक सेक्टर में तो हमारे लिए एक सब्जेक्ट के हम परेशान हो जाते थे कि अगर हमारे पास कोई अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर आ जाती थी, लेकिन अभी प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है। अब तकरीबन हम जो है 50% के करीब हम जो पेशेंट्स देखते हैं वो अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं लकीली, और हम उनके आउटकम्स भी, अब हम उनके ऊपर बात कर सकते हैं लॉन्ग टर्म आउटकम्स की। जैसे अभी हम बहुत सारी जो ये टारगेटेड मेडिसिन आ गई हैं, इनसे अगर कि कुछ का हमारे पास अपना डाटा मौजूद है, जो हम बात कर रहे थे, हमें कॉन्फिडेंस होता है क्या उन मेडिसिन के जो भी रिजल्ट हैं उसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस आ रहा होता है कि हम यूज कर रहे हैं और हमारे आउटकम्स बेहतर हो रहे हैं। इसी तरह से पहले हम जब बात करते थे अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर की, तो वो ऐसे ही लगता था कि अच्छा पता नहीं क्या होता होगा, कितने पेशेंट्स होंगे, क्योंकि हमारे पास पेशेंट था। अब हमारे पास उसका एक अच्छा पेशेंट है, और ऑब्वियसली जैसे डॉक्टर इरफान ने कहा कि हमारे अब जरूरत है कि हम अपने डेटा को कंबाइन करें, हम अपने सिस्टम्स डेवलप करें, डिजिटलाइज करें, ताकि हमारे पास बेहतर रिजल्ट हो। ऑब्वियसली हमें अपडेट नहीं करना चाहिए कि जी हमारी नेशनल कैंसर रजिस्ट्री बनेगी वही सारा कुछ करेगी। हम इंडिविजुअली अपने अपने इंस्टीट्यूट्स के लिए, मतलब जैसे अब हमने शुरू किया हमने अपने क्वार्ट में थोड़ा सा शुरू किया है, थोड़ा सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं कि हम शुरू करें, क्योंकि हम काफी टाइम से इसी चीज में रहते हैं कि जी हमें हमारा इंस्टीट्यूट कर देगा। अगर कि हर जगह पे HMI ये सब जो है वो तकरीबन सारे हॉस्पिटल में यूज हो रहा है, लेकिन अभी उसका हमें वो बेनिफिट नहीं मिला जो कि आइडियली इंस्टीट्यूट को उसका मिलना चाहिए। जो हमें मिलना चाहिए कि हम खोलें, हमारे पास सारा डाटा पेशेंट का मौजूद हो और हमें एक्सेस भी हो, हम उससे अपना डाटा जनरेट कर सकें। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमें फिर अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हिसाब से इसमें कोशिश करनी चाहिए, और उससे आगे कि हम एक दूसरे से। और हाँ, अब अगली जो चीज है, सॉरी अब इसी के ऊपर हम बात करें कि जो इम्पोर्टेंट एक डॉक्टर साहब ने बात की ना कि पेशेंट को काउंसल किया, वो नहीं माना। अभी अब ये हो रहा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, मेजॉरिटी, ये शायद हमारा फेलियर है कि हम उनको ये नहीं बता पा रहे। पेशेंट को एजुकेट करना, कम्युनिकेट करना, उसको फॉलो अप के लिए सेंसिटाइज करना। क्योंकि मैंने देखा है अब हमारे काफी सारे रेजिडेंट्स होते हैं, PGR होते हैं, वो पेशेंट को बगैर किसी चले कंसल्टेंट आपका नहीं है मौजूद, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी मौजूद है, आप मेडिकल मेडिसिन पढ़ के आए हुए हैं, आपको पता है कि आपने पेशेंट को, एक कैंसर पेशेंट को भेज रहे हैं, तो आपने उसको बताना है कि कब आना है, क्या टेस्ट करवाना है, क्या नहीं करवाना। नहीं बता के भेजते, पेशेंट को काउंसिल नहीं करते। सर्जरी के रेजिडेंट हो या हमारे ऑन्कोलॉजी के रेजिडेंट हो, और या जो पैथोलॉजी के भी रेजिडेंट रिपोर्ट पेशेंट को देंगे, उसको ये नहीं बताएंगे कि आपने मैंडेटरीली कहीं पे जाके दिखाना है। हमारा रेजिडेंट है, वो पेशेंट को भेजेगा, उसको ये नहीं कहेगा कि आपने कितने इंटरवल पे हमें दिखाना, आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। सर्जरी का रेजिडेंट सर्जरी होगी, वो रिपोर्ट लेके आता, कई दफा ये भी हुआ है, सर्जरी का रेजिडेंट नहीं बताता पेशेंट को कि आपकी रिपोर्ट जो है उसमें कोई ट्यूमर आ रहा है, यू नीड टू सी एन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, या आपको रेफर करना है। तो ये चीज जो है अब हमें एक फोकस है कि आवाम को सेंसिटाइज करना। लेकिन हमारा इस वक्त जो ज्यादा बड़ा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमारे जो रेजिडेंट हैं, हम लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, जो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, तो सबको जो है इस चीज के लिए कि हमने पेशेंट को गाइड कैसे करना। क्योंकि कई चीजें हैं, वो बहुत सारी चीजें जो है ना हमारे पास, ठीक है हमारे पास इंटरनेशनली स्टैंडर्ड, हम कहते हैं जी वो नहीं है, वो बहुत सारे ममालिक में नहीं है,
लेकिन हमारा हेल्थ सिस्टम जो है उसमें और बहुत सारे फ्लॉज होंगे, लेकिन हम जो अपनी हद तक चीजें ठीक कर सकते हैं उसमें अगर हम उसको लेके चले तो वो ज्यादा बेहतर है। उसके साथ ही हम काफी सारी पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं अपने सिस्टम में। Thank you very much. Now we are moving towards the last session of today, which is the session on the radiation oncology. Radiation therapy remains a critical component of multidisciplinary breast cancer management, with evolving techniques aimed at improving the outcomes while minimizing the toxicity. This session will focus on recent. We would like to welcome our worthy Vice Chancellor, Professor Mahmood Bayar. This session on the radiation oncology will focus on recent advances. This session will focus on recent advances in fractionation strategies and long-term toxicity management. Our first speaker for this session is Professor Dr. Sohaib Nadeem, a consultant radiation oncologist with experience in modern radiotherapy techniques. He will discuss the updates in fractionation strategies and partial breast radiation. Sir, please. हमारे नए सीईओ आए हैं हॉस्पिटल के, तो दे जी वो सब वो बैठे हुए, तो मेरे को मैं अभी आया। आज ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या कुछ पढ़ लिए? मैं बातें करते जाते साथ साथ, फिर क्या हुआ बातें? डॉक्टर सोहेब नदीम, मैंने कोई सब सवाल पूछ लिए। सर ये मेडिकल ऑन्कोलॉजी का था सेशन, जैसे मेटास्टैटिक और अर्ली स्टेज HER2 पॉजिटिव या पॉजिटिव सब बात हुई, स्क्रीनिंग पे बात हुई है, ठीक है, और अवेयरनेस पे बात हुई है सर। तो सर ये साथ लोग करते हुए सर ये भी रेडिएशन का शुरू करना जरूर। our next guest speaker Dr. Fariha और ये सब कौन लोग बैठे हैं सर, ये पढ़ने के लिए आए हैं सर। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इतना पढ़ना जरूरी क्यों है? मैं भी, मुझे मौका मिलता है, निकाल यू नो दैट प्रोफेशन आई एम अ सर्जन, तो मैं जब मुझे मौका मिलता है मैं फौरन निकाल के कोई ब्रेस्ट कैंसर का टॉपिक मुझे मिलता है, मैं फौरन पढ़ता हूँ उसके बारे में। उसकी वजह क्या है? कॉमन जी प्रोफेसर बास खोखर। नहीं, कॉमन कॉज इसमें तो कोई शक की बात नहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है जी। हाँ, उसकी वजह है कि अगर आप देखें तो इट इज वन ऑफ द वाइडेस्ट फ्रंटियर्स ऑफ यू नो मेडिकल ऑन्कोलॉजी या सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। उसकी वजह ये है कि ब्रेस्ट कैंसर ऊपर से लगता है बिल्कुल एक जैसा लगता है कि बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन बायोलॉजिकली डिफरेंट होता है, बिहेव भी डिफरेंटली करता है, और उसका रिस्पॉन्सेज टू डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो ट्रीटमेंट भी एंटायरली डिफरेंट है। तो इसलिए तो टेलर करना कि बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या, डॉक्टर समीर हुसैन, the best possible treatment किसी पेशेंट के लिए क्या हो सकती है, उसके लिए you need to know each and everything again and again and again. That is very important. डॉक्टर इहसानुर रहमान। अब बैलेंस आपने किस चीज के दरमियान करना होता है? एक सवाल मुझे पूछना है सांसद, बैलेंस क्या करना होता है आपने? ये जो मैंने सारे ब्रेस्ट कैंसर की क्या बैलेंस क्या चाहिए होता है? बैलेंस आपको चाहिए होता है बिटवीन द मैक्सिमम टॉलरेटेड थेरेपी एंड द मिनिमम। डॉक्टर मैजिबिन मसी आर्ट है कि जो मिनिमम इफेक्टिव थेरेपी और जो मैक्सिमम टॉलरेटेड थेरेपी उसके दरमियान आपने बैलेंस करना बस ठीक है, वो बता दिया जो बताना चाहता हूं। दैट इज द आर्ट। डॉक्टर मैजिबिन मसूद। जी के सांसद, तो हमने ये बेसिकली तय करना था कि व्हाट इज द मैक्सिमम टॉलरेटेड थेरेपी एंड व्हाट इज द मिनिमम इफेक्टिव थेरेपी, उसके दरमियान हम अपना काम चला रहे हैं। थैंक यू। क्या बात है, मेरी तारीफ है। थैंक यू। हो गया सब इधर क्यों रह गए? उधर सब रह गए। ये मैं आपको दिखा दूं उसका हाल क्या है। नहीं इधर दिखाई नहीं देते। ये उधर सब तो देंगे, उधर सब देंगे। ये सारे आ जाए फ्रंट सारे, और ये उधर देखते हैं बदली गए। डॉक्टर सोहेब नदीम, सर प्लीज कम फॉरवर्ड। आप शुरू करें। ये आप प्लीज कंटिन्यू करें। आप करें शुरू।
उसी का पैसा मिलता है मेरे ख्याल में ये भी हमारी एडवाइस को but this one it will be done. Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Suhaib. I am from CMH Lahore. I am clinical oncologist. Thank you very much, Dr. Ahmed Uzair Qureshi, for inviting. And 28 years के बाद मैं आया सर आपके इंस्टीट्यूट में और आपने मुझे मौका दिया. Thank you very much. Topic of my presentation is a bit different and it may be a bit boring. I will try to summarize and I will try to be brief so that you can understand it. Immobile why radiation, when, what fluctuation, and can we go for partial breast radiation or not? Why to radiate? This is a trial, 25-year follow-up of NSA-PTB06 trial, which showed that there was 24.9% decrease in ipsilateral breast tumor recurrence, 14.3 versus 39.2%. Similarly, Milan trial from 1973 to 1980, a cumulative incidence of breast tumor recurrence decreased from 8.8% to 2.3% after addition of radiation. And then EBC, PCT meta-analysis, early breast cancer trialist group, and this meta-analysis showed that 5-year local recurrence decreased from 41 to 11%, and 46% versus 13% at 10 years. And overall survival also improved, 9% at 10 years and 15% at 15 years. There was also a difference of 7% in overall survival. How many days of radiation? We initially used to do 25 fractions, 5 fractions per week, and over 5 weeks. And then we shifted to 15 fractions schedule, 5 fractions per week in 3 weeks, 40 and 15 fractions. Now for node-negative patients, we have shifted to 5 fractions only over 1 week. So time of the patient is saved and we can treat more patients on the same machine. This was a Canadian trial. We always go by book and we try to follow the trials and all the protocols. We never try to devise our own science and follow the protocols. This 16 fraction protocol is by this Canadian trial and it showed that 10-year local recurrence was 6.2 versus 6.7%. And this is a START trial. These are 2 landmark trials by UK. And we are following this 40 and 15 fractions trial, START B trial. And other option is following this START A trial, 39 and 13 fractions. And this is showing that local recurrence in all these protocols was similar. START trial toxicity was favoring 40 gray arm, hypofractionated arm. Breast shrinkage and induration were less in patients having short protocol radiation. Whether we go for lumpectomy boost or not, these are indications of lumpectomy boost. We give 40 gray to whole breast and then we boost that lumpectomy bed. And if the age is less than 50 or tumor is grade 3 or there is extensive intraductal component, it means extensive DCIS is also present. This was the no boost trial arm, and it showed that after adding the boost, the local recurrence decreases.
as compared to the no boost. Now, can we add this boost with the same fraction? The whole breast receives lower dose per day, and this boost volume receives higher dose per day. We can add it. Initially, we used to do 25 fractions of radiation and 8 fraction boost, total 33 days. Then we started 15 fractions radiation and 5 fractions boost, total 20 days. Now we have started using concomitant boost. For that, we need IMRT capable machines, which are available at most of the hospitals now. So we are giving whole radiation along with boost over 15 fractions. And this was the hypostic trial. Now, there is a trial, our fast forward trial, which showed that 26 grade 5 fractions over 1 week is non-inferior to 40 grade 15 fractions. So, in node negative patients only, because data of node positive patients is not yet mature, and we don't know the toxicity of 26 grade 5 fractions in node positive patients. So, this was a fast forward trial, and it shows 26 grade in 5 fractions is non-inferior. So this is the radiotherapy dose takeaway message. We can give 15 fractions radiation to all patients, and to node negative we can also treat in 5 fractions. For metastatic disease, we have multiple options. So we can give stereotactic radiotherapy or SRS or gamma knife cycle knife. You may have listened, heard these words, and it is available with us at CMH Lahore. We can also give whole radiation as per indications. We can radiate the metastatic spinal cord lesions. We can give the radiation to spinal cord lesions to prevent the fracture. We can also radiate the painful sites or impending fracture sites or post-surgical fixation of pathological fractures. ये कैसे पता चलेगा कि impending fracture है बोन में? आप लोग सर्जन हैं? नाउ बोन में कैसे पता चलेगा? माइलर्स क्राइटेरिया पढ़ा किसने? आपके पास स्कोर होगा ना, तो उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे। सिर्फ विजुअल इंप्रेशन पे नहीं जाता है, हम हर चीज को ग्रेड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इसी तरह स्पाइन में भी स्कोर है, इट इज कॉल्ड सिल्स स्कोर। We can also regulate for obstruction and compression. Initially, we used to give 20 days radiation for palliation, then 10. Now we are mostly using 5 fractions. For bony pain, we can give in single fraction. This 36 times 6 weekly fractions is very good schedule to give radiation to ulcerated or bleeding breast. हम बड़ी एक फ्रैक्शन मंडे पर लगाते हैं, फिर नेक्स्ट मंडे वीकली, और उसके दौरान फिर सिस्टेमिक थेरेपी भी चलती रहती है, और उसकी ओवरऑल टोटल डोज ज्यादा हो जाती है और लोकल कंट्रोल बेटर हो जाता है। This is about the partial breast radiation overall in this Cochrane review. Overall, this was inferior. This review supported whole breast radiation. This is diamond of overall impact of all these trials. This is the forest plot. Overall, it favored whole breast radiation, but for some certain population, we can give partial breast radiation, and that population is good risk patients like less than 3 centimeter tumors and ER positive or negative. It should not be grade 3. This was a low trial on the basis of which Royal College of Radiologists recommended partial breast radiation to more than 50 years of age, grade 1 to patients less than 3 centimeter ER positive HER2 negative. And we can give partial breast radiation either with mini tingers, the similar radiation technique with the linear accelerator 40 and 15 fractions, or we can give via brachytherapy. This is a brachytherapy catheter which is inserted into the breast by the surgeon, and this balloon distends in the lumpectomy cavity or seroma cavity, and we can take the source from these channels into different parts of breast and radiate. It is completed in 5 days. Similarly, NSA-DTB 39 trial, it showed that external beam we can give short protocol radiation over 5 days, 2 times per day.
This is the same catheter inserted in the breast lumpectomy cavity. We can also give interstitial brachytherapy. We can insert multiple needles. These needles are inserted by radiation oncologists themselves. This type of distribution is achieved, and we can radiate this volume uniformly. We can also give radiation during the surgery. If their margins are uncertain, or we know that the margins will be compromised, and surgeon indicates the site, and we radiate that site in operation theatre. We don't have this technique anywhere in Pakistan. How to radiate? We have photons and electrons. We don't have protons in Pakistan. We have radiotherapy for gynecological tumors, but not for breast tumors at our center. There is no breast radiotherapy available in whole of the Pakistan. This was the radiotherapy travel of we started from 25 fractions to 15 fractions to 5 fractions now. Okay. Similarly, for palliative radiation, we started from 20 fractions to 10 fractions, then 5 fractions. Now we are radiating painful bone sites in 1 fraction only. This is the best board on which we fix the patient. We need a similar position daily for reproducibility. This is breast thermoplastic sheath. We can fix the breast as well. Or breast in hanging position and prone position is also somewhat fixed. And we can get CT scan in just frequent position, and then we contour. For breast, we give medial tangent and one thing from opposing side lateral tangent. And for supraclavicular fossa, we give this red square 80 feet. This was 3D conformal. On the basis of CT scan, we can radiate. And then intensity modulation is ये जो बीम खुली है उसके अंदर different points different dose देते हैं, तो उसको हम intensity modulation कहते हैं. We can give radiation with multiple fields, like from this side, this angle, this angle, this angle, 6 or 7 angles, 9 angles. We can give radiation. Calculations बहुत complex हो जाती है तो computers calculate करते हैं. We have IMRT available with us. We have to contour these sites. जो एरिया हमने रेडिएट करना है उसको हम कंट्रोल करते हैं स्लाइस पे स्लाइस, और ऑर्गन एड्रेस भी कंट्रोल करते हैं. लंग हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, अगर ब्रेकिंग टैक्सिस की डोज ज़्यादा हो जाए तो ब्रेकिंग टैक्सिस भी कंट्रोल करते हैं, और हम सब ऑर्गन्स की डोज को कंट्रोल करते हैं. We also have facility of volumetric arc therapy, जिसमें मशीन एक साइड से रोटेट करना शुरू करती है और कंटिन्यूस रोटेट करती रहती है और शेप चेंज करती रहती है और इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन करती रहती है और 360 डिग्री रोटेट कर देती है. और मतलब फिक्स बीम नहीं है, 5, 4 या 7 बीम इस तरह से नहीं है, 360 डिग्री रोटेट होती है और 7 ड्रिबल करती है. इसमें ऑर्गन की स्पेयरिंग बहुत अच्छी हो जाती है और डोज यूनिफॉर्मिटी टारगेट के अंदर बहुत अच्छी होती है. तो वी हैव दिस टेक्निक अवेलेबल विद अस. देन हम कंट्रोल करने के बाद हम ये जो इम्प्लांट लगे होते हैं उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके बाद इम्प्लांट के बाद भी रेडिएशन कर सकते हैं. बट सिलिकॉन इम्प्लांट के बाद एक डर ये होता है कि कंट्रैक्चर बन जाएगा इम्प्लांट का. So we can have these radiation schedules for curative radiation, and we are using these two mostly. Then जब प्लान बन जाता है, जब हम प्लान अप्रूव करते हैं और ये देखते हैं कार्बन एक्सिस की डोज अच्छी है कि नहीं, और उसके बाद ये कार्बन एक्सिस की डोजेस के हमारे पास डिफाइंड कंस्ट्रेंट्स हैं और हमने उनको मीट करना होता है, इंटरनेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं. Now decreasing the dose to the heart, we have active breathing control, voluntary breath hold और deep inspiratory breath hold technique. Deep inspiratory breath hold कुछ सेंटर्स के पास है, हमारे पास भी है. हम डीप इंस्पिरेशन में पेशेंट को कहते हैं कि ब्रेथ को होल्ड करें. उससे ये होता है कि हार्ट इज पुश्ड बैकवर्ड्स. ये विदाउट डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्ड सीटी स्कैन है, ये डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्ड के साथ. तो हार्ट इज पुश्ड बैकवर्ड और ये जो रेडिएशन वाला एरिया है इससे पीछे चला जाता है. हार्ट की डोज कम हो जाती है. ये लिनियर एक्सेलरेटर मशीन है, इसका हेड है जहाँ से बीम ओरिजिनेट करती है. दिस इज द मशीन. इसके ऊपर हमारे पास कोन बीम सीटी स्कैन इसके ऊपर अटैच्ड है एट 90 डिग्री.
हम पेशेंट की ट्रीटमेंट पोजीशन वेरीफाई करने के लिए उसी जगह पे फोन यूसीटी भी कर सकते हैं और एक्सरे भी ले सकते हैं आपको बोलो, और पोजीशन को एडजस्ट भी कर सकते हैं, बाहर से बैठे अंदर नहीं जाना पड़ता, हमें काउंटर के अंदर नहीं जाना पड़ता। एंड दिस इज द सर लाइन पोजीशन में फिक्स, वो जो आर्म फिक्स करते हैं एक्सटर्नली रोटेटेड एब्डक्टेड आर्म, तो में हम बहुत रेयरली हम करते हैं। वो जब पुरानी टेक्निक्स थी फ्लोरोस्कोपिक हम करते थे तो उस पर मसला होता था। अब हम सीटी स्कैन करते हैं, हमारे पास थर्मोप्लास्टिक शीट है, जैसे भी ब्रेस्ट हो, पेंडुलस ब्रेस्ट हो, वो हम उसके अंदर थर्मोप्लास्टिक शीट पे फिक्स करके उसके ऊपर कवर, और अब जब तक उस कवर में फिट नहीं होगी तो ऊपर शीट फिट नहीं होगी, तो सेम पोजीशन बन जाती है डेली। तो अब हम प्रोन में नहीं करते हैं। तो ये रिस्पिरेटरी ब्रेथ शीट जो हैं ये कस्टमाइज होती हैं हर पेशेंट के लिए। सर 10-12 हज़ार की शीट आती है सर, उसको हम कस्टमाइज करते हैं, प्लास्टिक की शीट होती है, तो हम उसको पिघला के ऐसी बनाते हैं। फिर फेस के लिए भी हम करते हैं, हेड के लिए भी उसका मास्क डिजाइन करते हैं। स्टीरियोटैक्टिक के लिए तो हमें सर सब मिलीमीटर एक्यूरेसी चाहिए होती है। हम मार्जिन ही 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर मार्जिन का रेडिएशन कर रहे होते हैं। तो स्टीरियोटैक्टिक के जो मास्क है उससे महंगा है, वो 25,000 का 30,000 का या उससे भी महंगे हैं, 90,000 का मास्क, वो हम उसको फिर सब मिलीमीटर एक्यूरेसी से हम ट्रीट कर सकते हैं। इसमें सर डीप रेस्पिरेटरी ब्रेथ होल्ड है, ये हम हमारी मशीन ब्रीदिंग पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर देती है। ये ब्रीदिंग पैटर्न को रिकॉग्नाइज करती है, फिर हम कहते हैं डीप सांस लो और रोक लो। तो ये जो ऑरेंज लाइन और इस ऊपर वाली ब्लैक लाइन के दरमियान में कहीं सांस रुकेगा तो रेडिएशन डिलीवर होगी, अगर उसका सांस इससे कम हुआ तो रेडिएशन डिलीवर नहीं होगी, हार्ट पीछे पुश हो जाएगा और डेली एक ही पोजीशन में होगा। इसकी शॉर्ट एक 4 सेकंड की वीडियो है। ऊपर सांस लें, सांस रोकें, जब उससे ऊपर जाएगा ऑरेंज लाइन से तो फिर मशीन ने डिलीवर करना शुरू कर दी, ज़्यादा हो गया, रेडिएशन डिलीवर हो गई। जब पेशेंट का सांस वो थक जाएगा, छोड़ देगा, तो ये रुक जाएगी, मशीन खुद ही रुक जाएगी। फिर दोबारा से 3-4 सांस लेने के बाद हम दोबारा से उसको कहेंगे कि सांस लें। ये उसके कंट्रोल है हमारे पास। So take home message for breast cancer is early diagnosis is the key. We have to discuss the cases in multidisciplinary team. We have to preserve the organ. अब लोगों को मतलब organ damage करने का ज़माना चला गया, और कुछ 70-80% लोगों के organs preserve हो सकते हैं। And then we have to हमने अपने resources को अच्छी तरह से utilize करना है और थोड़े दिनों में ट्रीटमेंट करनी है। मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज जैसे आप लोग कर रहे हैं, ऐसे हम भी मिनिमली फ्रैक्शनेटेड थोड़े दिनों की रेडिएशन करने की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Hold respiratory pressures from 40 कर रहा है, 15 fractions over 3 weeks है। जब हम RNI के लिए करते हैं उसमें भी सेम डोज 40 का रहेगा, और जब लेट ब्रेस्ट कैंसर हो तो उसमें रेडियोथेरेपी की डोज 50 होगी कि नहीं, उनमें भी रिड्यूस हो गई है। रेयर ब्रेस्ट कैंसर की डोज सिमिलर है, क्योंकि कोई केसेस बहुत रेयर हैं, आपके ऊपर स्टडीज नहीं हो रही हैं, तो आपने उसी के ऊपर एक्सट्रैपलेट करना है, फीमेल के ऊपर ही एक्सट्रैपलेट करना है। और सेम डोजेज हैं, चंद एक डिफरेंसेस हैं जो सर्जरी में या उसमें बहुत थोड़े से डिफरेंसेस हैं, तो ऑलमोस्ट सेम। मेल में भी 40 का है, डोज सेम है। 26 से 5 फ्रैक्शन सिंगल वीक की जो रेडिएशन है वो हम सिर्फ उन केसेस में करते हैं जो नोड नेगेटिव है, जिसमें हमने इलेक्टिव नोडल रेडिएशन भी ना करनी है। हम नोड्स को इलेक्टिवली रेडिएट भी करते हैं। लाइक लेवल 1-2 के अगर पॉजिटिव आ गए तो लेवल 3 की सर्जरी नहीं हुई, लेवल 3 एक्सिला की, लेवल 4 एक्सिला की, जिसको सुप्रा क्लेवा कहते हैं, तो उनकी सर्जरी नहीं हुई, तो उनको हम फिर इलेक्टिवली रेडिएट करते हैं। लेवल 1-2 वो इन्वॉल्व नहीं थे, किसी भी मोडालिटी में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन चूंकि सर्जिकली एड्रेस नहीं हुए तो हम उनको रेडिएट करेंगे लेवल 3 और 4। RNI के साथ लोकल डेटा है हमारे पास पार्शियल ब्रेस्ट रेडिएशन। पार्शियल ब्रेस्ट रेडिएशन हम लोग बहुत रेयर केसेस में करते हैं, इतने अच्छे हमारे पास होते ही नहीं है। हमारे पास इतने एक्सटेंसिव केसेस आते हैं, और वाले आते हैं, और अब आने लगे अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के लिए, बट पार्शियल ब्रेस्ट रेडिएशन हम नहीं करते अभी। सर RNI के साथ इंटरनल मेमोरी नोड्स हम करते हैं रेडिएट के नहीं, इंटरनल मेमोरी असल में बहुत लंबी हो जाती है, कैलकुलेट्स मुझे मिले थे तो उसके ऊपर मैं कर नहीं सकता था। इंटरनल मेमोरी नोड्स की अपनी इंडिकेशन है, हर चीज की अपनी इंडिकेशन। कोर ब्रेस्ट को कब करना है, सर्जरी के बाद चेस्ट वॉल को कब रेडिएट करना है, 3 से ज्यादा हो तो रेडिएट करना है,
नोड की क्या क्या इंडिकेशन है, इलेक्टिव नोड की क्या इंडिकेशन है, इसी तरह से इंटरनल मेमोरी की इंडिकेशन है। इंटरनल मेमोरी की इंडिकेशन ये है कि N2 डिजीज में तो सब के करते हैं इंटरनल मेमोरी, नेगेटिव नोड्स की इलेक्टिवली हमने कर लिया। और जो N1 डिजीज है वो मीडियल सेंट्रल क्वाड्रेंट, मीडियल सेंट्रल क्वाड्रेंट में N1 आ जाए तो हमने इंटरनल मेमोरी को तीसरी इंडिकेशन पे पॉजिटिव हो, इंटरनल मेमोरी की मोडालिटी में पॉजिटिव हो सर। इससे फोटो पे क्रॉस करने के चांसेस बहुत कम हैं। अच्छा, एक मेरा और क्वेश्चन है। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो हम 40 की मेडिकेशन डोज दे रहे हैं, जो लंपेक्टमी बूस्ट है, जो लंपेक्टमी साइड पे आपने दिया, इट इज एडिशनल टू दैट रेगुलर 40 ग्रे और दैट इज इंक्लूडेड इन द 40 ग्रे। बूस्ट का मतलब है कि उससे एक तो ज्यादा डोज देनी है, उसमें हाई रिस्क था। तो हाई रिस्क का ब्लोकर एक तरह एक ही है कि क्लोज मार्जिन पासिंग मार्जिन, अब क्लोज मार्जिन वाली बात खत्म हो चुकी है क्योंकि नो ट्यूमर एट द मार्जिन, ट्यूमर एट द इंटू वाला मार्जिन आ गया। लेकिन ग्रेड 3 और यंग फीमेल लेस देन 50 इयर्स ऑफ एज और एक्सटेंसिव इंट्राडक्टल कंपोनेंट का मतलब है कि एक्सटेंसिव डीसीआईएस भी प्रेजेंट था इन एडिशन टू इन्वेसिव टेस्ट। तो ये तीन इंडिकेशन है। ठीक है, लेकिन वो एडिशनल डोज है, उसके उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो एडिशनल टू 40 ग्रेड रेडिएशन है। अच्छा, और दूसरा एक और जो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो हाइपोफ्रैक्शनेटेड रेडिएशन डोज की हम बात कर रहे हैं अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर्स में, क्योंकि अब कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं क्योंकि अच्छे कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स अवेलेबल हैं, उनकी बीसीएस भी हो रही है, HER2 पॉजिटिविटी में कंप्लीट रिस्पांस भी आ रहा है, तो मे बी दे आर द कैंडिडेट्स ये लोकलाइज्ड हाइपोफ्रैक्शनेटेड रेडिएशन डोजेज उनको हम दें। तो आर यू कलेक्टिंग द डाटा ऑन दैट? मैम हमारे पास डाटा अपने पेशेंट्स का सबका अवेलेबल नहीं मतलब आर वी गेटिंग इट for publication purposes, for the purpose that we must know how the patients are responding and rest of the हमारे stuff. पास डाटा अवेलेबल है, लेकिन पब्लिकेशन में नहीं कर सकता हूँ अच्छा, अगली बार, क्योंकि हम एक सिंगल इंडिविजुअल है ना यहाँ पे, यहाँ पे इंस्टीट्यूट में स्टैटिस्टिशियन है नहीं है, सर्विस एनवायरनमेंट में काम करते हैं जिसमें हम काम करते हैं, हमारा काम डेली कितना करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, वो कितनी साइज करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। डिफिकल्ट है, वैसे काफी पब्लिकेशन हमारे सेंटर पे भी काफी है, बट जिस तरह से होनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। अच्छा, और जो वेस्ट में लोगों के पास अवेलेबल है कि इंट्राऑपरेटिव रेडियोथेरेपी, सीएमएच में कुछ ऐसा अवेलेबल है? नो है। रेयर इंडिकेशन होती है और वो फिर ऑपरेशन थिएटर में रखना, थिएटर टाइम इंक्रीज हो जाना, थिएटर में पहले रूटीन वाले केसेस को जगह नहीं मिलती। मैं कहूँगा मुझे भी 2 घंटे के लिए वो नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट उसके लिए भी नहीं है, लेकिन टाइम वो भी नहीं है, ऐसा दोनों चीजें हैं। वैसे वो इलेक्ट्रॉनिक एडिशन है और वो सुपरफिशियल एडिशन होती है, और जिस साइड को हम करना चाहेंगे उससे डीप ऑर्गन्स को भी नहीं जाती है। अगर आपने खोला हुआ है तो उधर पर एग्जांपल सार्कोमा है, पैरास्पाइनल, तो स्पाइन को रेडिएशन हम पैरास्पाइनल एरिया को रेडिएट कर स्पाइन करेंगे, डीप नहीं जाते। और एक लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रेस्ट सर्जन हैं और उनको रेडिएशन टाइम के लिए बड़े लंबी क्यूज में पेशेंट को रहना पड़ता है, और एडिक्वेट टाइम पे अगर रेडिएशन ना मिले तो रिस्क ऑफ रिकरेंस भी है। तो सीएमएच में ऐसी कोई फैसिलिटी है? एक तो आपके सीएमएच में तो अपने जो आर्मी ऑफिशियल्स और रेस्ट ऑफ द स्टाफ मेंबर्स, लेकिन जो आम नॉर्मल रूटीन पब्लिक है उनके लिए कोई, एक तो पेन टेलर है जो कि मुझे पता है कि पेन उस पे है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि एक नॉर्मल इंसान या एक आम मतलब हु इज नॉट अ स्टाफ मेंबर कि उसको हम कैसे वहाँ पे क्यू में वी कैन फैसिलिटेट दैट पेशेंट? क्यू तो हमारे पास नहीं है, हमारी इतनी क्यू होती है कि आ जाएगा पेशेंट, हम आज स्कैन कर लेंगे, नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे, तो क्यू का तो इशू नहीं है हमारे पास, वो हम सही लेते हैं उसको सो फार सो गुड। जो पेइंग है उसकी क्या है? हाँ, व्हाट इज द कॉस्ट एक्चुअली? ब्रेस्ट की क्यूरेटिव रेडिएशन जो है, जो सिंपल टेक्निक से होती है, वो हम 230 टू 40 देते हैं, डीएच वाले के 3 लाख 260 है, तो मतलब कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं, जनरली से कॉस्ट है। 268 किसकी है? अगर डीप एक्सपीरेटेड ब्रेस्ट, अच्छा इस मशीन पे अगर करें, लेकिन दोनों ही लाइनेक्स हैं, लेकिन एक में इंस्पिरेटरी होल्ड वाला मैकेनिज्म, एक में नहीं। टाइम 3 गुना लग जाएगा उसको, 2-3 गुना टाइम लगता है, बार-बार उठना, बार-बार स्कैन में भी टाइम में। Thank you, Dr. Sahib, for this enlightening talk on the vaccination strategies. Our last speaker for today is Dr. Sameer Hussain. He's a radiation consultant oncologist. He will address the important issue of radiation-related toxicity and long-term outcomes. अस्सलाम
वालेकुम। मेरा ये चौथा लेक्चर है कि हर दफा लंच और ऑडियंस के दरमियान मेरा लेक्चर होता है। तो ये इत्तेफाक है, चाहे इधर हो चाहे मेन हॉल में हो, हर दफा ना लंच और ऑडियंस के दरमियान मैं ही खड़ा होता हूँ। तो आई ट्राई टू बी ब्रीफ। मैं सिर्फ एक दो चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। डॉक्टर महमूद एयाज ने एक चीज बताई थी कि हम करना क्या चाह रहे हैं ब्रेस्ट में, उसकी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है कि हम सौदा है ना, ये सब एक सौदा है, जिस्म के साथ एक सौदा है कि आप कितना उसको इंसल्ट दे रहे हैं और लेना क्या चाह रहे हैं, टाइम गेन कर रहे हैं, क्वालिटी। इसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या यूज होती है, हम किस चीज को बेहतर कर रहे हैं, थेरेप्यूटिक इंडेक्स। इस सारी गेम थेरेप्यूटिक इंडेक्स की। और विद टाइम जिस तरह सर्जिकल टेक्निक्स इंप्रूव हुई हैं, कीमो इंप्रूव हुई है, HER2 एंटी HER2 इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, अच्छी हार्मोन ट्रीटमेंट्स आ गई, इसी तरह रेडिएशन भी बेहतर होती गई। बेहतर क्या होती गई, एफिकेसी वही रही है, उसकी साइड इफेक्ट्स कम होते रहे। मैडम ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि आपकी कोई पब्लिकेशंस नहीं, पब्लिकेशंस नहीं हो सकती ब्रेस्ट की। ब्रेस्ट 1 ईयर डिजीज नहीं है, ब्रेस्ट 20 ईयर डिजीज है। जो हमारे आर्टिकल्स रेडिएशन के अभी 10 इयर्स पे पब्लिकेशंस आ जाती हैं, उनको लोग रिजेक्ट कर देते हैं। एक लेटेस्ट सुप्रीमो ट्रायल आया है 2 महीने पहले, उसको एक तो इंश्योरेंस वालों ने रिजेक्ट कर दिया, ये तो हमारी जेब पे लाता है, हम भी कहते हैं ठीक है। अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका में इंश्योरेंस बेस्ड है, इंग्लैंड वाले खामोश हैं, अभी हम वी आर वेटिंग कि नाइस उसके ऊपर क्या कमेंट करेगा। ऑस्ट्रेलियंस वो भी खामोश हैं कि बस अमेरिका ने ना कर दी, हम ये गुनाह अपने सर पे क्यों ले, हालांकि वहां भी इंश्योरेंस बेस्ड है। तो ये ब्रेस्ट 20 इयर्स डिजीज है। ये जो हम आज कर रहे हैं, शायद हमारे रेजिडेंट्स यहाँ पे होंगे उनको पता चलेगा कि डेटा मेंटेन करना, आई थिंक ये प्रैक्टिकली हमारे सेटअप में पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस कोई आपका स्टैटिस्टिकल ग्रुप हो और वो इसको फॉलो अप करता रहे। तो ये स्लाइड सिर्फ आपको ये बता रही है थेरेप्यूटिक इंडेक्स के बारे में। आप लाइफ को मैक्सिमाइज कर रहे हैं और रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं। आपने ब्रेस्ट को ट्रीट करके भेज दिया और अब जो सर्वाइवल्स हैं लंबे होते गए, उसका नुकसान क्या हो रहा है कि पेशेंट हैज टू सफर द कॉम्प्लिकेशंस। वो कॉम्प्लिकेशंस जो पहले शायद इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, या पेशेंट कभी भी उनको अंदर वो नहीं करता था, रिपोर्ट नहीं होती थी, अब इतने अच्छे फॉलोअप्स आ रहे हैं, लाइफ प्रोलॉन्ग हो रही है कि वो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। पहले जो आप लोग रेडिएशन करवाते होंगे, जो लोग बड़े अरसे से इस ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी बिजनेस में, उनको पता होगा कि पेशेंट गया और सारी स्किन जाएगी, ब्रेस्ट काली होगी, स्किन जाएगी, सुना होगा। अभी भी हमसे आगे पूछती है अम्मा जी, वो ये सारा कुछ सड़ जाएगा तो फिर तुसी की करोगे? हम उनको कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, एवरीथिंग इज गोना बी ओके, नहीं जलेगी। कई स्किन फोल्ड्स में कुछ, इंफ्रामेमरी फोल्ड में कुछ थोड़ा बहुत बर्न हो जाए तो हो जाए, वरना नहीं बर्न होता। तो वो क्यों? टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, एफिकेसी उतनी रही है, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन मिटिगेट होते गए। और जो पहले, अगेन जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, 90% 5 ईयर सर्वाइवल हो चुका है। तो हमें इसमें से कोई नहीं डाटा मिलना, हम जितना मर्जी बड़ा डाटा ले लें, उसका भी सर्वाइवल 90.2, ये ओवरऑल सर्वाइवल नॉन मेटास्टैटिक की बात करूं, 90.2 हो जाएगा, 90.3 स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट रहेगा। कैप्लन-मायर कर्व का आपको पता होगा, जो कैप्लन-मायर कर्व्स इनके सेपरेट होते हैं वो 20 इयर्स पे जाके, आजकल लेटेस्ट जितने ट्रायल्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं 20 इयर्स पे, 15 इयर्स पे रेडिएशन ट्रायल्स के सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बस ये डायनामिक्स और ये सारे जो आपके गोल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं विद टाइम। ये जो एक्यूट टॉक्सिसिटी है, सब एक्यूट, लेट एंड लॉन्ग टर्म, ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें शिफ्ट होती रही हैं। पहले एक्यूट इंपॉर्टेंट होती थी कि ब्रेस्ट बर्न्स आ रहे हैं, सारा फोकस उस पर था। अब पेशेंट आते हैं, हम सोच ही नहीं रहे होते एक्यूट का। हमारी ये जितनी डीप इंस्पिरेशन, ब्रेथ होल्ड आपने देखे, ये सारी गेम हम उसको 10 साल बाद जब वो लॉस्ट टू फॉलो अप हो चुका होगा, प्रैक्टिकली 100% लॉस्ट टू फॉलो अप इन 10 years टाइम। आई डोंट नो वेदर यू एग्री, मेरे पास 100% लॉस्ट टू फॉलो अप इन 10 years टाइम। ज्यादा 5-6 साल के हैं, उसके बाद लोग हार्मोन थेरेपी भी घर बैठ के लेते रहते हैं, नहीं आते वापस। तो ये हम उनको एक सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वी आर वॉकिंग ऑन दैट नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स के, जहां पे आपकी कार्डिक और पल्मोनरी हेल्थ भी मेंटेन रहे फॉर years and years to come। एक्यूट रेडिएशन डर्मेटाइटिस किसी जमाने में इंपॉर्टेंट था, अब नहीं है। हाइड्रोकॉर्टिसोन वर्क्स वेल अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 हो जाए। ग्रेड 3 डेफिनेटली इट्स
some kind of error of technique और वो जो daily की alignment होती है उसमें error आ जाए तो grade 3 dermatitis या positive margin या skin involved हो तो बहुत वो जो 90% ये होता था साइड इफेक्ट एक्यूट रेडिएशन डर्मेटाइटिस का ये 5 से 7% रह गया है और जब भी आता है हम परेशान हो जाते हैं कि क्यों हुआ ये कैसे हो गया ये नहीं होना चाहिए था प्रोफाइलैक्सिस इंपॉर्टेंट है जो इसमें स्टेरॉइड्स दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 2 स्टेरॉइड्स मोमेटासोन जहाँ पे ज्यादा अवेलेबल नहीं है हाइड्रोकॉर्टिसोन वर्क्स इक्वली वेल जो एक्टिव केयर है अगर हो जाए ग्रेड 3 डर्मेटाइटिस तो उसमें सिल्वर सल्फाडायाजिन कॉमनली अवेलेबल है और पोलीफैक्स वर्क्स वेरी वेल आप टॉपिकल कोई भी उनको दे सकते हैं बहुत एक्सट्रीम केसेस क्योंकि मेरे तो नॉलेज में और एक्सपीरियंस में नहीं है लकीली मेरा वो कैरियर प्रोग्रेशन ऐसी रही कि अच्छी मशीनें अल्लाह ताला की तरफ से किस्मत थी कि उन पे काम करने का मौका मिलता रहा मैंने कोबाल्ट शोबाल्ट पे काम नहीं किया मुझे नहीं पता तस्वीरें देखी हैं ऑफ कोर्स दे लुक हॉरेंडस लेट इफेक्ट्स सारा गेम ही लेट इफेक्ट्स के फाइब्रोसिस लिंगेक्टेजियाज ये फाइब्रोसिस है आप फाइब्रोसिस हो गया चला गया पेशेंट वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कुक होता रहेगा और 10 साल बाद उसने बताना भी नहीं है जिस डॉक्टर के पास जाना है उसने जो हमारा एक्चुअल सेटअप है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर था और रेडिएशन हुई कोई उसको लिंक नहीं करता और वी हैव टू बी केयरफुल राइट एट दिस मोमेंट कि ये हो ही ना हम अपने वो अचीव ही इस तरह से करें गोल्स कि ये वाले साइड इफेक्ट्स अचीव ही ना हो पाए फैट नेक्रोसिस वेरी रेयर समटाइम्स पेनफुल लग मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि कोई हमारे यहाँ ये टेक्स्ट कहता है कॉमन है बट इट इज नॉट कॉमन वी हैव हार्डली एवर सीन फैट नेक्रोसिस कार्डियोवैस्कुलर रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है कि अब लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट है उधर ही नीचे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पड़ी हुई होती है जब आप टेंजेंशियल फील्ड्स दे रहे होते हैं बिल्कुल चेस्ट वॉल के साथ लगी हुई है आपकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सो यू हैव टू सेव इट मींस अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस पेशेंट आपके पास नहीं आना हमें पता है नहीं आना दिस इज जस्ट द ऑनेस्टी फ्रॉम द रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट वो उस पे मेहनत करता है नहीं मेहनत करता क्योंकि पेशेंट ने कभी आपको आके वापस नहीं बताना कि हार्ट अटैक हो गया और अगर हो भी गया था तो आप क्या आगे से कह देंगे कि ये तो जो रिस्क है it is as much as it is in normal population आपके पास radiation oncology actually is at the top of food chain answerable to very less people unluckily somehow मतलब सर्जन की गलती फौरन से पकड़ी जाती है मगर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की कभी कभार पकड़ी जाती है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की रेयरली पकड़ी जाती है अनफॉर्चुनेटली मगर ये हर एक के ना वो होते हैं कुछ ना कुछ खास बातें होती हैं स्पेशलिटीज की अगर आप इसका रिस्क कैलकुलेटर्स हमारे पास मौजूद हैं हम रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं 7.4% इंक्रीज पर ग्रे ऑफ डोज हम 40 ग्रे डोज दे रहे हैं एक ग्रे ज्यादा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग हो जाएगी तो उससे 7.4% इंक्रीज हो जाएगा ऑफ फ्यूचर कोरोनरी इवेंट का DIPH गेम चेंजर ये जो आप नीचे देख सकते हैं Waiter. So just want to show you DIPH कर क्या रहा है ये इनहेल किया है ये आप उसका डीप टिश्यू देखें लंग का ये हार्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कितना ये 1 सेंटीमीटर की साइज है इट्स जस्ट दिस 1 सेंटीमीटर जिसकी वजह से आप सारे ये साइड इफेक्ट्स बचा सकते हैं कोई ये 2 इंच दूर नहीं हो जाएगा कितना आप इंस्पायर कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर कर लेंगे हार्ट नीचे ये ऊपर बस ये वो थेराप्यूटिक इंडेक्स है ये वो विंडो है जिसमें आपने प्ले करना होता है pulmonary health again with these latest techniques pulmonary fibrosis को आपने बचाना है each gray is important और ये जो रिस्क है उसका इंक्रीज होता जाता है pulmonary fibrosis का आगे if you are less careful with the lungs lymphedema अक्सर सर्जन लिम्फेडिमा फेस कर रहे होते हैं आज भी ये हम दोनों की मुश्तरका जदोजहद के नतीजे में ये साइड इफेक्ट होता है इसके लिए अकेला रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जिम्मेदार नहीं होता लॉट्स ऑफ डायसेक्शन एंड लॉट्स ऑफ रेडिएशन और अर्ली पिक हो जाए तो थोड़ा सा बेहतर है मगर आपके पास जब कोई ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट आता है एग्जामिनेशन में क्या क्या देख रहे होते हैं आप 1 साल बाद आए तो उसको क्या एग्जामिन करते हैं लोकल में स्कार है एक्जिला है और आर्म है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस मतलब
यहाँ से आपने 10 सेंटीमीटर ऊपर और उसकी सर्कमफ्रेंस को नोट करनी है, और ये चेंज इन साइज लिम्फ एडिमा डेवलप होने से 1.5 साल पहले अपीयर होता है एवरेज। तो आप 1.5 साल पहले पिक कर सकते हैं आपको कुछ होने वाला है, ये 1 सेंटीमीटर का चेंज है, यू कैन एडवाइज एक्सरसाइजेस एंड रियली प्रिवेंट दैट लिम्फ एडिमा। Brachial plexopathy, very rare. I'm not going to talk much about it. Rib fractures, shoulder stiffness, again manageable. Rib fracture will heal automatically if it happens. Painkillers, NSAIDs, that's all we need. Physiotherapy. Second malignancies, honestly, chances of developing a second malignancy increase exponentially with age, rather than with, you say, with the radiation dose. With advancing age, the chances of second malignancy are going to increase. So radiation will pull in angiosarcomas are known to occur. Hardly ever we have seen lung cancers. Future solutions are again in technological advances. Hypofractionation के बारे में बात कर चुके हैं, scheduling और patient selection के बारे में भी पहले बात कर चुके हैं। ये partial breast irradiation के जरिए भी हम काफी, एक patient है C cup size breast है और lump पड़ा हुआ है काफी superficially, and a candidate for partial breast irradiation. You can go with partial breast irradiation और उसकी सारे ये side effects आप बचा सकते हैं. So right selection for the patient. बड़ा famous ये डेविटा है मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बुक, उसमें लिखा हुआ है the cure of the disease should not be more devastating than the disease itself. और ये चैप्टर की पहली लाइन है, और इसी चैप्टर की आखिरी लाइन उसने क्या लिखी हुई है, इसी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। A patient must survive to suffer complication. अब इन्हीं दोनों सेइंग्स के दरमियान सारी गेम है कि तुम्हारी आखिरी लाइन माने या तुम्हारी पहली लाइन माने। तो वो आखिरी लाइन में कहता है you make the patient survive first, और पहली लाइन में कहता है cure of the disease should not be more devastating than the disease. With that, I thank you all for your patient listening. So my question is, I have seen a couple of patients in last 6 months that are very with the post-radiation mastitis. So it writes curare on them, there's lots of things on them, on neurotonics, but they didn't respond. They said मुझे दर्द बहुत है. No cure. So what's the कुछ नहीं हो सकता। सच्ची बात बता रही है, कुछ नहीं हो सकता। लंबी लंबी छोड़ता रहूंगा, कोई फायदा नहीं उसका। मैस्टाइटिस है, ठीक है, देखिए पेंटॉक्सिफाइलिन है, वो भी आप अगर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल्स पढ़े तो नेगेटिव ही कहते हैं, ठीक है। कार्बामेज़ेपिन, गाबापेंटिन, ये पेन किलर्स हैं, ये सब हम दे रहे होते हैं, कोई स्पेशल थेरेपी नहीं है इसके अंदर। So the end option is the mastectomy. नहीं ऐसे इतनी सेटल हो जाएगी 2 साल में। देखिए ये जो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से पेन होती है ना, हम पेशेंट कह रहे थे कब तक रहेगी, हम उसे कहते हैं 80% ठीक हो जाएगी बाय द एंड ऑफ 1 ईयर, बाकी 20% अगले 3 साल में शायद ठीक ना हो। जो मैक्सिमम मैस्टाइटिस वाले हैं ना, वो अगर साइक्लिक चेंजेस नहीं हैं तो वो पेन किलर से तकरीबन 90% ठीक हो जाते हैं, बाकी गाबापेंटिन से बहुत अच्छे पेशेंट रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कोई ऐसी फिजिकल थेरेपी या कोई स्पोर्ट नहीं है कि जिसमें आप कहें कि स्पोर्ट्स ब्रा यूज करना है, कह सकते हैं अगर पेशेंट कैंडिडेट है, मगर वो भी गुड क्वालिटी स्पोर्ट्स ब्रा हो तो ठीक है, जो यहाँ से कोई नहीं मिल रहे होते। तो हमने जिनको कहे पेशेंट्स को दे डू नॉट सपोर्ट इट एज मच। I have one patients totic breast, उसमें complication चांस ज्यादा होता है। पेशेंट्स में totic breast नहीं, वो टॉटिक ब्रेस्ट के बारे में उन्होंने बताया, पेंडुलस ब्रेस्ट के बारे में, वी यूज ब्रेस्ट शीट। हम वो पूरी ब्रेस्ट को देखिए, ब्रेस्ट हैंग जब पेशेंट लेटा होगा हैंग कर जाएगी टुवर्ड्स द राइट साइड। वो जो प्लास्टिक की शीट है ना, वो आप कह रहे हैं मोम की तरह होती है, हम उसको जब अप्लाई करते हैं तो वी जस्ट पुश द ब्रेस्ट अपवर्ड्स ताकि वो नीचे ना हो। अगर टॉटिक ब्रेस्ट है तो हम उसको पुश कर देंगे अपवर्ड्स, हम उसको सेंटर में ले आते हैं ताकि वो जो बीम है उसको सारे का सारा टारगेट एक जगह पे इकट्ठा मिले। ये नहीं कि मीडियल तो यहीं से शुरू होना है और लैटरल पहुंचा हुआ एक्सियल, और ये बड़े फ्रीक्वेंट है एल्डरली पेशेंट्स से बहुत ज्यादा टॉटिक ब्रेस्ट हो जाते हैं, पेंडुलस ब्रेस्ट होते हैं, ये चैलेंजेस हैं। I have one confusion. जी। You said about grade 3 dermatitis radiation. जी। Is it always a technical flaw? No, not always. Sometimes we do it intentionally. जैसे skin involve the patient की, margin positive आ गया skin का, ठीक, तो we have to radiate that area। हम बता देते हैं पेशेंट को कि होगा, कितना होगा we don't know, but we are not sparing। मगर काफी ज्यादा टेक्निकल फ्लॉज आ जाते हैं जो रेडिएशन की वजह से। देखिए हम प्लान कुछ कर रहे हैं, नीचे टेक्नीशियन जब डिलीवर कर रहा है तो थोड़ा सा उसमें गैप
हमेशा 0.5 सेंटीमीटर का इतना गैप आ जाता है, तो वो जो आपने 0.5 to 1 सेंटीमीटर बचाया हुआ है अगर वो रेडिएट हो जाए तो उसमें मोइस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्किन हो सकती है। फिर चेंजेस भी साथ साथ आती है, स्वेलिंग हो जाती है। फिर आपने वो जब वीडियो चल रही थी डीप इंस्पिरेशन ब्रेस्ट की, आपने देखा 2 लाइनों के दरमियान भी इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप एक लाइन पे करते रहें, ब्रीथ करते रहें, इट इज नॉट पॉसिबल। वो भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत उसका ब्रेथ होगा तो उसके बाद साथ में चेस्ट वॉल मूव करती रहती है। थैंक यू। Here we conclude the first day of our press conference. It was a valuable day, started from the radiology and then followed with the oncology principles and then radiation oncology. Tomorrow there will be talk about surgical techniques regarding oncoplastic techniques and further related surgical expertise. There will be good panel discussion tomorrow as well. So thank you all the audience, thank you the participants, thank you our respected delegates who have contributed so experienced talk regarding the radiation oncology, regarding from Madam Majvi for radiology purposes in the screening in the denser breast tissues. And special thanks to Dr. Fair, Dr. Sleep, especially came out from CMS Lahore. Lunch I think is ready. I will not be further hinder in between you. So inshallah tomorrow we meet again. ओके जो फॉर पार्टिसिपेंट्स के लिए आपकी अटेंडेंस और फीडबैक फॉर्म अगर आपने नहीं लिखा तो आपके लिए मस्ट बिकॉज दिस ऑल विल बी फ्रॉम